हाँ मिल रहा है आपका वॉइस आ रहा है। तो अब ये आप मेरे कंप्यूटर से उस पे भी हैं। मैं यस करूंगा, आप स्टार्ट करिए और आप अपना होम का आप अपना पेज लिंक पेज ले लीजिए, एक्टिव पेज ले लीजिए, क्योंकि उससे खराब आ रहा है, आपका कटा कटा चेहरा आ रहा है, खराब है। वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दीजिए। हाँ ठीक है, ये मंदिर वाला फिर भी बेटर है, मंदिर वाला फिर भी बेटर है, ले लीजिए। मैं रूम तक रूम से आ रहा हूँ। अच्छा The word yoga means skill. Skill to live your life, to manage your mind, to deal with your emotions, to be with people, to be in love and not let that love turn into hatred. Yoga is for everybody and for every body. So let's start our International YOGA E-Conclave final day at Delhi College of Arts and Commerce. Namaskar, good morning, Adab, Shastriya Kal to one and all present over here and all our special guests, dignitaries all the way from India and from abroad, covering whole part of the world. So, I would like to welcome all our guests on behalf of Parmarth Niketan, Rishikesh, Indian Yoga Association, Youth News Online, in collaboration with IQAC of Delhi College of Arts and Commerce, supported by Morarji Desai, National Institute of Yoga, Sri Mangalam College of Law and Management, National Institute of Events Management. So, initiating next, I would like to request Mr. Himanshu Pandey, the Editor-in-Chief, Youth News Online, to please come up on the stage and welcome our guests. Thank you, Alankrita. Again, on behalf of International Yoga E-Conclave Secretariat, I would like to welcome you all. This event is organized by YouthNews.online
Paramath Niketan Ashram and Indian Yoga Association, supported by National Institute of Event Management, Art of Living Foundation, Morarji Desai National Institute of Yoga, Delhi College of Art and Commerce, and a lot of other supporting organizations on board, Ekam Yoga, Isha Foundation. So today's session will be attended by a lot of guests from India and abroad. We would like to welcome everyone here. Also, we would like to welcome today the Dr. Bini Sareen, Ambassador, Regional Director, Global Peace Initiative for India by USA, Doctor of Spirituality, Brahma Kumari's Global Hospital. We would like to welcome Sadhvi Bhagwati ji, Secretary General, Global Interfaith Wash Alliance. We would like to welcome Sri Dhakaram Sapkote, Founder, Ekam Yoga. We would like to welcome Nandini Tripathi, Director of Program Implementation, Global Interfaith Wash Alliance, Sri Madan Manam, Founder Director, Global Institute for Blissful Life Instructions, Service and Security on Blissful Life. Dr. Preeti Mishra, Director, Vyasa Canada, also the Secretary to the Hindu Temple, Burnaby, Canada. Acharya Shantanu Ji Maharaj. We would like to welcome Dr. Vishwas Madlik, Founder, Yog Vidyatham. We would like to welcome Amadio Bianchi. We would like to welcome Amy Blasio from European Yoga Federation, Andre Rial, Sugadev Volker Brits from Germany, Dr. Yogacharya Dr. Ananda Balyogi Bhavdani, Chairman ICYER, Ananda Ashram Pondicherry, Ms. Roli Singh, Clinical Psychologist, Master Practitioner for Neuro-Linguistic Programming, Ashtang Yoga Instructor. We would like to welcome our guest Rohit Ranjan, Yoga Faculty from Art of Living, Sri Mohan Karki, Founder Holistic Healthcare Foundation and the Yoga Guru Institute, Ms. Garima Bhandari, Motivational Coach and internationally acclaimed holistic wellness and yoga mentor, Dr. Shakti Kumar Pandey, journalist and life skill trainer, Acharya Eric Monkus from Purna Yoga Advaita School, Yogacharya Sumit Ji from Yoga Patanjali Institute, and Yana Fry, spiritual teacher and life coach, Yogacharya Vipin Joshi, founder Doon Vidyapeeth, Sri Mukesh Shukla Ji from Ministry, Sri Gaurav Prakash Ji, Sri Tanuj Narayan जी, सभी का मैं आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। एंड ये इवेंट हमारा आज भी फेसबुक के और फेसबुक का जो इंडियन योगा एसोसिएशन का पेज है, हमारा पेज है, प्लस साथ ही साथ यूथ www.tinyurl.com/youthnews1234 पर देखा जा सकता है, जिसको आप सभी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, होप यू लाइक दिस इवेंट। थैंक यू। Thank you, Mr. Himanshu Pandey ji, for welcoming our honorable guests. Yoga E-Conclave. ओम स्टार्ट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम स्टार्ट। हरिओम स्वामी जी। हरिओम जी। हरिओम हरिओम। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका सही आ रहा है प्रीति जी, आपका सही आ रहा है। स्वामी जी का थोड़ा सा आगे आ जाए। आप थोड़ा और आगे आ जाइए। प्रीति जी आप थोड़ा ओम हरिओम तत्सत।
सभी को कनाडा से, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर से अंतर्राष्ट्रीय योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जून 21 के लिए, और आपकी पूरी टीम को इस महान उत्सव को जो आप मना रहे हैं, योग से पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी यूथ टीम का, यूथ ऑनलाइन टीम का। तो आज बहुत हमारा सौभाग्य है कि कनाडा में स्थित स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश जी, जो हमारे गाइड हैं और हमें योग शिक्षा इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इतनी सक्षमता के साथ हम सभी के बीच में इन्होंने फैला रहे हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया में काउंसिल जनरल के साथ हमारा हर वर्ष इस उत्सव को हम मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे को। और आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी आए हैं और अपना योग पे कुछ अपने गीत और अपनी जो नॉलेज है उस पे कुछ व्याख्यान करेंगे। और स्पेशली योग जो हमारे लिए इसकी एक it is a complete science, and myself being a yoga therapist trained by Dr. H.R. Jai Gange, Rasa, Canada, and I am leading that movement here with Vishwa, and then the Hindu temple Burnaby, which you are seeing behind us, which is one of the major temples in Canada, the first one, and it's a huge congregation where we lead yoga day and the yoga programs. So again, yoga का एक पूरा complete दर्शन क्या है, और योग के जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो हमारे शास्त्रों की क्या व्याख्या है, उससे उस पे कुछ लाइट स्वामी जी डालेंगे। और हम स्वामी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमें एड्रेस करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद हिमांशु जी। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं थोड़ा सा पतंजलि जी को प्रणाम करूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को जो योग के जनक माने जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने पदेन वाचाम वाणी के मल को ठीक करने के लिए व्याकरण महाभाष्य दिया। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, चाहे हम अंग्रेजी बोलें, हिंदी बोलें, संस्कृत बोलें, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यह भी एक योग है। और आयुर्वेद के द्वारा शरीर के मल को ठीक किया, और चित्त के मल को ठीक करने के लिए महर्षि पतंजलि ने हम लोगों को योग दर्शन दिया, योग शास्त्र दिया। उन पतंजलि जी को हम नमस्कार करते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र में पाठ करता हूं, जिसको हम संगठन सूक्त कहते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। May we march forward with a common goal. हम लोगों की गति में एकता हो। May we be open-minded and work together with harmony. खुले मन से हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और may we share our wisdom, our thoughts for integrated family. May we follow the example of our ancestors who achieved their goal by virtue of being united.
to unite our individual consciousness with universal consciousness is actually yoga. लेकिन इसमें जो अवरोध आता है कि मन हमारा रुकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ, ये मन हमारा चंचल है, जैसे हवा को रोकना कठिन है ऐसे मन को रोकना कठिन है, हम मन को कैसे रोकें? गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में 34वें श्लोक में प्रश्न हुआ, 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, अरे अर्जुन, तुम्हारी तो भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। और देखो पॉजिटिव थॉट, कोई प्रश्न करे और कोई अपनी असामर्थ्य दिखाए तो भगवान उसको ये नहीं कहते कि हाँ तुम नहीं कर सकते, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी भुजाओं वाले समझदार हो, तो फिर ताकतवर हो। तो कहते हैं मन दुर्निग्रह है और चंचल है। मैं मानता हूं दुर्निग्रह है माने रोका जाना असंभव नहीं है, कठिन है, और चलम चंचल भी है। लेकिन उसके लिए भगवान ने 2 विधि बताई। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को रोकने के लिए पतंजलि जी ने सूत्र दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने, जो हम लोग योगी राज कहते हैं, उन्होंने बताया कि 2 प्रकार से मन को रोक सकते हैं। एक तो निरंतर अभ्यास करें, अभ्यास प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, और डिटैच्ड, ये अगर हम संसार से हम लोग वैराग्य करें, संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं ऐसा समझकर और निरंतर अभ्यास में लग जाएं, तो असंशयम महाबाहो बनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय, तू माने परंतु, माने रोक सकते हैं, परंतु उसके लिए अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा विचार करते हैं कनाडा में बैठे हुए, हम थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाइए कि हम सारी दुनिया को यह योग सिखा देंगे, इस योग के बल पर हम, इस योग के बल पर हम सब रोग भगा देंगे। हम यम और नियम करेंगे, आसन भी साधेंगे, फिर प्राणायाम करके इंद्रियों को बांधेंगे। निज लक्ष्य धारणा से हम ध्यान लगा लेंगे, हम सारी दुनिया को यह योग सिखा देंगे। हम प्रातः काल उठेंगे, फिर योगाभ्यास करेंगे, हम सब बलवान बनेंगे, हम सब धनवान बनेंगे। हम दुर्बलता सारी तन मन से हटा देंगे, हम सारी दुनिया को यह योग सिखा देंगे। पतंजलि जी का सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। हम लोग अपने चित्त को निरुद्ध करके प्रसन्न करें। तो कैसे प्रसन्न करें? साधारण तौर पर हम देखते हैं यह योग है, समझदारी से देखें, सुने, समझें। हमें 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, पतंजलि महात्मा ने अनुभव किया। एक तो सुखी व्यक्ति मिलते हैं,
एक दुखी व्यक्ति मिलते हैं, एक पापी व्यक्ति मिलते हैं, एक पुण्यात्मा व्यक्ति मिलते हैं। पतंजलि ने सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम यथा संख्य मनुदेश समानाम। पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, 4 प्रकार के लोग हैं। तो सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करो, मित्र बनाओ जो सुखी है, तो आप भी सुखी हो जाओ। और दुखी के साथ करुणा करो, मैत्री करुणा। दुखी मिले कोई, उसके साथ करुणा करो, उसकी सहायता करो। और मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो जो कोई पापी व्यक्ति मिल जाए उसकी उपेक्षा करो, और जो कोई पुण्यात्मा मिल जाए उसके साथ क्या करोगे? मैत्री करुणा मुदिता से रहो। मोद प्रसन्न आनंद होता है जब कोई सज्जन व्यक्ति मिलते हैं। तो यह योग है। हमारे यम और नियम जो 2 बहुत बड़े अंग हैं योग के। आजकल मैं देखता हूं विदेशों में कई स्थानों पर हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। तो लगता है आसन, प्राणायाम और ध्यान वो मुख्य अंग बन गए हैं। तो यम और नियम हम लोग नहीं करते, और फिर प्रत्याहार नहीं करते, और फिर समाधि को हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये मैं प्राथमिकता देता हूं यम और नियम को। यम और नियम क्या है जो योग में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो मैं यम और नियम को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने न्यूयॉर्क में विचार भी किया था बहुत लोगों के साथ कि यम और नियम के बिना योग नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पतंजलि ने इन 5 को यम बताया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 को नियम बताया। तो हम लोग यम नियम क्यों करें? पतंजलि जी ने बहुत अच्छा समाधान किया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। पतंजलि जी कहते हैं कि यदि आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो संसार में आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। तो कोई, हम कहते हैं कोई शत्रु या मित्र नहीं है, बस एक सर्वत्र वही है, वह भी अन्यत्र नहीं है, कहीं यत्र या तत्र नहीं है। हम समाधिस्थ होकर मन में उसे पालेंगे, हम सारी दुनिया को यह योग सिखा देंगे। जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से किसी की हिंसा नहीं करते, तो पशु पक्षी भी आपने देखा, मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि मेरे मन में हिंसा भाव रहता है। जब हिंसा भाव निकल जाता है तो चिड़िया गोद में आकर बैठ जाती हैं, हाथ पर आकर दाना ले जाती हैं। महात्माओं के पास मोर, कोयल सब साथ में बैठते हैं। सब देखो पशु पक्षी, शेर भी आकर बैठ जाता है, चरणों में प्रणाम कर लेता है महात्मा को, क्योंकि हिंसा की भावना ही नहीं है। ऐसे ही सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। हम जब सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमारी कोई भी क्रियाकलाप व्यर्थ नहीं जाती, हमें उसका फल मिल जाता है। तो हम सत्य में प्रतिष्ठित हों, ये योग है, बेसिक फंडामेंटल योग। और उसमें अहिंसा और अस्तेय प्रतिष्ठायाम, ये मैं पतंजलि जी के सूत्र बता रहा हूँ। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। हम अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। किसी का धन हम चाहे लें, चाहे कहीं से कितना भी मिलता हो, हम स्वीकार नहीं करते। तो सारे संसार में धरती से रत्न निकलते हैं, हीरा निकलता है, सोना निकलता है, और हम गरीब हैं क्योंकि हमें अस्तेय प्रतिष्ठित नहीं है, अस्तेय की हमने प्रतिष्ठा नहीं की। सारे रत्न हमारे सामने आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। पतंजलि कहते हैं जब आप ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हैं
अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियां, समस्त कर्मेंद्रियों को ब्रह्मणि चरति थी ब्रह्मचारी, परमात्मा में लगा देते हैं, परमात्मा के अनुसंधान में लगा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। विषयों के रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो पांचों इंद्रियां जा रही हैं, उनको वहां से जैसे हम नींद में जाते हैं तो नींद में जाकर हमको शक्ति मिल जाती है। तो महात्मा लोग उस नींद वाली स्थिति को ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं और इंद्रियां सुदृढ़ हो जाती हैं। भगवान का नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी भगवान है। हम तो इंद्रियों को शक्तिहीन कर देते हैं, और जब नींद में जाकर भगवान से मिल करके इंद्रियां फिर से शक्ति प्राप्त करती हैं, सवेरे को फिर फ्रेश हो जाती हैं। तो वैसे ही हम जागृत अवस्था में ही ध्यान करते हैं, इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं, ध्यान में लगा देते हैं। तो इसमें अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य, तो फिर अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह के लिए पतंजलि महात्मा कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य सती जन्म कथनता संबोध। आजकल हम लोग योग करके भी और फीस लेते हैं, फीस लेनी पड़ती है, योगा स्टूडियो बनाते हैं, बड़ी बड़ी हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग वास्तव में योग को समझ नहीं पाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कितना ही योगा करके आश्रम बना लो, पैसा कमा लो, मन तो आपका भी शांत नहीं हुआ, इच्छाएं कितनी बड़ी हुई हैं। उसमें बताया कि जब अपरिग्रह करते हैं, आप ज्यादा परिग्रह माने संचय संग्रह नहीं करते और साधना में लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जन्म कथनता संबोध। हम लोग प्रार्थना करते हैं योगियों से, साधकों से कि संसार के झंझटों में ना फंस के अगर योगाभ्यास आप करें तो आपको पता चले कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जन्म कथनता संबोध। हमने मनुष्य जन्म किस लिए लिया? फिर पशु, आजकल तो कुत्ते भी वो बढ़िया बढ़िया मकानों में रहते हैं, बढ़िया गाड़ियों में रहते हैं। आजकल तो हम पशु पक्षी की तरह से नहीं है ना। आहार निद्रा भय में तो सामान्य में तद पशुभिर नराणाम धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो पशु पक्षियों में भी तो सब भोग मिल जाते हैं। पशु तो बढ़िया, पक्षी तो हमसे भी बढ़िया बढ़िया फल खा लेते हैं और बढ़िया आकाश में ऐसे ही उड़ लेते हैं और बढ़िया ऑक्सीजन ले लेते हैं। मेरे विचार से उनको हार्ट अटैक भी नहीं होता होगा, उनको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होती होगी। तो ये सब हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर शौच है, संतोष है, शौच तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये यम नियम है। तो आसन में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। आसन सिद्ध, तस्मिन् माने आसने सिद्धे सति, आसन सिद्ध हो जाए तो देखो पद्मासन में मैं बैठ जाऊं, ये पद्मासन है, दोनों पैरों को ये ऐसे रख लेते हैं। पद्मासन में बैठ करके अब 3 घंटा 42 मिनट में बैठा रहूं तो मेरा आसन सिद्ध हो जाता है। आसन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक प्राणायाम नहीं होता है। तस्मिन् सति आसने सिद्धे सति, आसन सिद्ध हो गया, कोई दर्द नहीं है, बैठा हूं आराम से। और उसके लिए भगवान गीता में समझाते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग से दुख दूर करना चाहते हैं, पतंजलि ने सूत्र दिया हेयम दुःखम अनागतम। जो दुख आपके पास आने का प्रयत्न कर रहा है, अभी नहीं आया कल को आएगा, उसको हेय कर दीजिए, निराकरण कर दीजिए। हेयम निराकरणीयम अनागतम दुखम निराकरणीय। आज तो हम सुखी हैं तो चिंता ही नहीं है, लेकिन योगाभ्यास करके कल के आने वाले दुख को हम हटा सकते हैं। तो क्या करें? उस दुख को दूर करने के लिए योगाभ्यास करें। तो इसके लिए तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। तो ठीक युक्त आहार विहार करें, ठीक से सोएं, ठीक से जगें, ब्राह्म मुहूर्त में ना सोएं। ब्राह्मी मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। सवेरे सवेरे सो जाएं तो पुण्यों का क्षय हो जाता है। तो फिर उसमें फिर प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राण में श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। तो हम इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो हम लोग कहा करते हैं प्राय करके प्राणायाम मन को रोक देता है, प्राणायाम आपको ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देता है। और प्राण का आयाम, यदि प्राण मजबूत है तो हम पतले दुबले भी रहें तो भी हम कमजोर नहीं होते, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है प्राणायाम करने से।
तो प्राणायाम में हम लोग जब इनहेल करते हैं तो देखो मन से क्या सोचते हैं, व्हेन वी इनहेल तो वी आर इनहेलिंग आवर ब्राइटर फ्यूचर, हम अपने बहुत उज्जवल भविष्य को अपने भीतर ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य भी अंदर ले रहे हैं। और व्हेन वी होल्ड, जब हम रोकते हैं सांस को तो हम क्या सोचते हैं, वी आर होल्डिंग आवर प्रेजेंट, प्रेजेंट को पकड़ते हैं, प्रेजेंट ही तो फ्यूचर बनेगा ना। और फिर जब व्हेन वी एक्सहेल वी आर एक्सहेलिंग आवर पास्ट, हम अपने जो बीत गया उसकी चिंता हमको खा जाती है, हाय ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा, वो उसको तो वापस नहीं ला सकते। तो हम इनहेल करते हैं और होल्ड करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल में अपनी ऊर्जा को हम भीतर ले रहे हैं। और प्राणायाम में मैं एक बहुत अच्छा प्राणायाम आपको बताऊं कि हम लोग उसमें भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भौरे के जैसा, ब्लैक बी, भौरा क्या करता है, हमिंग साउंड, उसमें हम लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं, खूब लंबी गहरी सांस लेते हैं और खूब फेफड़ों को भर लेते हैं बढ़िया, और सांस गहरी लंबी लेकर के नाभि तक नहीं, मूलाधार चक्र तक जाए ऐसा अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें और सांस लेकर फिर भौरा ऐसे करता है। फिर लंबी गहरी सांस लें खूब लेकर, फिर एक बार इस सांस को हम ऐसे भ्रामरी मुद्रा को करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे, और इसमें षण्मुखी मुद्रा करते हुए तो अपने मुख को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, नाक को बंद करेंगे मिडिल फिंगर से, और आंखों को बंद करेंगे इंडेक्स फिंगर से, कानों को बंद करेंगे दोनों अंगूठों से, और फिर बंद करके ऐसे सांस को पहले खींचेंगे और फिर खींचते हुए सांस को फिर छोड़ेंगे, ओम का उच्चारण करते हुए षण्मुखी मुद्रा करते हुए। अब प्राणायाम में आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करके हम लोग और भी खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा में खेचरी मुद्रा आपको दिखा देता हूँ। सब मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा जरा देखें, जीभ को भीतर ले जाते हैं और जीभ को भीतर ले जाकर और यहाँ सहस्रार से जो अमृत टपकता रहता है उस अमृत को पीते रहते हैं, और अमृत को पी करके हम निरोग रहते हैं, अपना इम्यून सिस्टम बढ़िया रखते हैं और सैकड़ों साल जी सकते हैं, 100 साल 200 साल भी जी सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो इतना ही समय हमारे पास है, हमें और भी बहुत काम करने हैं। बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी हो जाएं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अब आप आए कनाडा, और प्रीति जी ने बड़ा सुंदर यहाँ कनाडा में आश्रम बनाया है, वरद आश्रम, विश्वा योगा सेंटर और व्यासा कनाडा। बहुत सुंदर यहाँ इधर 7 टनल पार करके, 7 पहाड़ों को पार करके बड़ा इनका आश्रम है। मैं भी वहाँ रह के आया, और वहाँ पर बढ़िया फ्रेजर नदी, गंगा जी की सौतेली बहन है, वो बहती हैं। और मैं भारतवर्ष से बीमार होके आया, और वहाँ एक ही 24 घंटे में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि 3-4 साल से यहाँ रह रहा था। तो भारतवर्ष में थोड़ा सा मुझे पॉल्यूशन लगा,
तो यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है, आप आए, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग निरोग हों, सब सुखी हों और सबको धन धान्य से समृद्ध हों और कोई संसार में दुखी ना हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेद। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद हिमांशु जी और आपके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। और प्रीति जी ने बड़ा सुंदर यहाँ कनाडा में आश्रम बनाया है, वरद आश्रम, विश्वा योगा सेंटर और व्यासा कनाडा। बहुत सुंदर यहाँ इधर 7 टनल पार करके, 7 पहाड़ों को पार करके बड़ा इनका आश्रम है। मैं भी वहाँ रह के आया और वहाँ पर बढ़िया फ्रेजर नदी, गंगा जी की सौतेली बहन है, वो बहती हैं। और मैं भारतवर्ष से बीमार होके आया और वहाँ एक ही 24 घंटे में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि 3-4 साल से यहाँ रह रहा था। तो भारतवर्ष में थोड़ा सा मुझे पॉल्यूशन लगा। तो यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है, आप आए, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग निरोग हों, सब सुखी हों और सबको धन धान्य से समृद्ध हों और कोई संसार में दुखी ना हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेद। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सत्य प्रकाश जी और डॉक्टर प्रीति जी। हम सारी दुनिया को योग सिखा देंगे। भारत से जाकर कनाडा में बस जाना और वहाँ पे भारत की संस्कृति को जिंदा रखना और विदेशियों को भारत के मूल संस्कृति का ज्ञान देना। बहुत शत शत नमन आपको। और आपका स्पीच सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, प्राणायाम योग की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ मैं। और अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। शी इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस। वॉश अलायंस है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, connecting India and abroad on spiritual platforms in the banks of river Ganges and lap of Himalayas। तो साध्वी भगवती जी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ वर्चुअली। It's such a joy to be together with all of you, especially the youth, this youth online program. इसलिए मैंने हाँ किया। योग तो एक चीज है that's very dear and very close and something that I love. But योग का इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे योजनाएं हो रहा है, but youth, जो youth को जोड़ना, that's really special and beautiful. So I'm very glad to be here with all of you and especially with the youth today for this beautiful program. The core point is to realize that yes, everybody now is doing yoga, and that's fantastic. Sharir swast ho jata hai, strong ho jata hai, and we should all do yoga. It gives us that beautiful strength. But what we need to remember is that yoga is a system, not only about what kind of aerobics can I do, or what kind of calisthenics can I do, or how long can I stand on my head, or how much of a pretzel can I weave myself into. Yoga is a system of life. Yoga is a system of actually changing the way that we think, changing the way that we interact in the world, changing the way that we understand our own lives and our connection with the world. नहीं तो आप जहां जहां देखते हैं
we're seeing suffering, or we're seeing these symptoms of suffering. All of the violence that we see, whether it's terrorism, whether it's communal violence, whether it's war, whether it's drug-induced violence, whether it's gender-based violence, domestic violence, all of this is due to suffering. मैं तभी violent हो जाऊंगी अगर मेरे भीतर में शांति नहीं है. जिनकी भीतर में शांति है, that person will never be violent outside. We're seeing such a rise in alcoholism, in drug addictions, in suicide, in divorce. All of these are symptoms. They're a symptom of our internal suffering. यदि मेरे भीतर में शांति नहीं है, तो I'm going to turn to alcohol, to drugs. अगर इतनी अशांति है, तो फिर मन में ये विचार आने लगता है कि चलो छोड़ो इसको सब, let me end my life. अगर मेरे में शांति नहीं है, तो दूसरों के साथ जीना becomes very, very difficult. मैं दूसरों के साथ रह नहीं सकते हैं अगर मेरे में शांति नहीं है. अच्छा, अच्छा, हमारे टीम is just figuring out the video, शायद कोई technical का problem चल रहा है. अब ठीक है. तो as I was saying, आजकल जहां जहां आप देखते हैं, we are seeing this suffering, and that suffering is manifest in our depression, in our anxiety, in alcohol use, in drug use, in suicide, as we suffer inside. So we bring suffering into the world around us. And yoga is the system for actually ending the suffering within ourselves. Yoga is a system not just about strengthen my muscles or a trim waist, but it's a system actually to end our internal suffering. In yoga, one of the core teachings and core principles of the science of yoga has to do with freedom from the 5 core causes of our suffering. जिसकी वजह से depression होती है, anxiety, stress होती है, addiction होती है, restlessness होती है, conflict दूसरों के साथ होती है. And also, on a global level, जिसकी वजह से we're seeing climate change, we're seeing environmental destruction. And those causes of suffering are what in the science of yoga we speak about as the 5 kleshas. And of course, the first is avidya, lack of awareness, lack of wisdom, lack of knowledge, lack of truth. But it's not lack of knowing mathematics or lack of knowing physics. It's lack of knowing the truth of who we are. जब तक हम अपनी शरीर से identify करेंगे, then naturally we are going to feel separate from each other. There's going to be competition. If I think I am my body, I am its race, its religion, its color, its career, its bank account, its sundarta or lack of sundarta, then there's going to be anxiety. I need to have more. It's going to lead to anger. It's going to lead to competition. It's going to lead to greed. It's going to lead to jealousy and misery.
And this is where yoga clears the avidya and brings vidya, brings truth, brings knowledge, brings wisdom, brings awareness. As we move through the 8 limbs of yoga that the sage Patanjali gave us, as we move from our body through our breath into our minds, into eventually dhyan, meditation, and then from meditation into samadhi, it brings that vidya, because through that experience we realize that we are not separate from the object upon which we are meditating. There's this sense of here I am over here meditating upon that divine over there, mere se alag hai. But through the practice, a vidya gets cleared, vidya arises, and we realize, the lover and the beloved are actually one. The meditator, the object of meditation, are actually one. And in that union, we move into samadhi. And then, of course, we have asmita, our ego, that akkad, that inability to bend, that sense of this is who I am, don't you know who I am? Jo mein chahti hoon, jaise mein chahti hoon, waise hi hona chahiye. Everybody else should dance according to my tune. Everyone else should think as I think. I am right. But yoga हमको झुकने सिखाता है. पहले शरीर में उत्तनासन करते हैं. It's not just good for the hamstrings, but it's actually good for our egos. As we bend in the body, we learn to bend in the mind. Pujya Swami ji हमेशा कहते हैं, झुकता तो वो है जिसमें जान होता है, अकड़ तो मुर्दे का पहचान होता है. Those who bend are those जिसमें जान होता है, those who are alive, living. Those who don't bend, whether their heart's beating and there's breath in their lungs or not, they are dead as a corpse. So yoga teaches us to bend and therefore frees us of asmita. Then, of course, we have rag and dvesh, our likes, our dislikes, that which we are hoarding and grabbing and pulling, that which we are pushing away. And all of that is rooted in this illusion that somehow meri shanti, meri khushi, meri jivan ka meaning, jivan ka fulfillment is going to come from things outside. Agar mere ko isko prapt kar sakungi, isko achieve kar sakungi, isko khareed sakungi, then I will be happy. This is what our culture tragically now is starting to teach people. Have more, buy more, own more, achieve more, acquire more, obtain more. And jo aap nahi chahte hain, jisko nahi chahte hain, push them away. As though the world are simply objects. Objects for us to use, to enjoy, and then to discard, or objects for us to push away. Jiski wajah se humko lagta hai I am not in shanti. Chahe it's an in-law, chahe it's an employer, an employee, a co-worker, a neighbor. Chahe it's the weather, chahe it's the stock market. We are blaming all of these things for our lack of inner peace, and we try to push them away. But yoga teaches us through yam, through niyam, how to actually live in the world without grabbing, without stealing, without hoarding, and of course, without pushing away. Because as we finally find ourselves after all of the yam and niyam with Ishwar Pranidhan,
surrendered to the divine, we realize that in that surrender to the divine, sab kuch mil jata hai. Through that, we experience everything. We become reconnected to the source of it all. The फिर राग द्वेष अपने आप, they go away. And of course, lastly, abhinivesh, this fear of death. Now, of course, it's not about losing the fear of death of just the physical body. That is in our evolution. Every single creature on earth, from a mosquito to an amoeba, every creature does not want to die. The problem is that we have identified as the one who dies. We've identified as the body. But we're not the body. We are that which doesn't die. And this is where yoga, चाहे भगवद गीता के माध्यम से, चाहे योग शास्त्र के माध्यम से, चाहे इतने सारे ग्रंथों और yogis के माध्यम से, we learn you are not the body. You are the soul. That which, as Bhagwan Krishna reminds us, cannot be cut with knives, burned by fire, wet with water, dried by the wind. So we are not that which dies. And that shift in awareness, mrityorma amritam gamaya, that shift from being identified as the one who dies to the one who is eternal, that shift is what yoga gives us. तो बहुत सारे और कहने का है, लेकिन समय की मर्यादा की वजह से काफी सारे लोग हैं बोलने का, so I will end it here. But just to remind you all, as you do yoga, yes, let the body become strong. Yes, become flexible. But remember that it's not only in the body. Allow yoga to become the system for your life. And then you'll find that not only is the body strong, but the mind, the heart, the awareness, it's all strong. It's all balanced. It's all aligned. And it's all united. So thank you all for this beautiful opportunity to be together today, and a very happy International Yoga Day in advance. थैंक यू साध्वी सरस्वती भगवती जी, आपने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा समझाया कि इंसान का शरीर इज़ नॉट एवरीथिंग, योर आत्मा इज़ एवरीथिंग, और आत्मा को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे फुलफिल करें, दैट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. आपका गुस्सा, आपका जिद, आपका वो होड़ कि पाना है मोर, ये सब कहीं ना कहीं कम होने लगेगा, सही होने लगेगा इफ विल कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन इन आवर लाइव्स. थैंक यू सो मच साध्वी भगवती जी. आपको देखने से ही एक अजीब सी एनर्जी मिलती है, ऑल्दो इट वाज ऑन वर्चुअल मोड देन टू.
Now I would like to request our special guests. There are many special guests who are already boarded here in our auditorium in Delhi College of Arts and Commerce. So I would like to request Shri Dhakkaram Sapkote ji to please come up on the stage and be seated. Dr. Arun Joshi ji, Shri Madan Manav ji, Miss Roli Singh ji to please come up on the stage. They are all our speakers who are in physical form all the way from Jaipur, Haryana and different places of India. Proceeding next, we have Miss Nandini Tripathi. She is Director of Program Implementation Global Interfaith WASH Alliance. She is from Parmarth Niketan, Rishikesh. Okay, Miss Nandini will join us later due to some connection problems. So I would like to request Shri Dhakkaram Sapkote ji to please come up on the stage, and he is having his yoga, Ekam Yoga, connecting globally people and curing them with their health problems at Jaipur. Yes. Most heartiest welcome, sir. परमपिता परमेश्वर को शत नमन, जिनके माध्यम से मैं आप सबके समक्ष हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी भाई, आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं हमेशा योग को प्रचार प्रसार के लिए। और आप सभी बैठे हुए महानुभावों को सत नमन, आप सभी को, और स्टेज पे जो महानुभाव हैं उनको भी सत नमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इतना अच्छा प्रोग्राम है तो मेरा था हैप्पीनेस के ऊपर। तो आप सभी से मैं समय किसी भी अच्छे काम को हम शुरू करते हैं, उस काम की शुरुआत हम कैसे करते हैं? आप किसी भी काम को, अच्छे काम को शुरुआत कैसे करते हैं? दीप्ति, आपसे भी मुलाकात हुई थी, कैसे करेंगे? प्रार्थना से। प्रार्थना किसकी? जिसको हम फॉलो करते हैं, मे बी गणेश जी, मे बी जीसस, मे बी अल्लाह, मे बी नानक, मे बी महावीर, मे बी बुद्ध, जिनको भी हम फॉलो करते हैं। और जब हम योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। यहाँ पे विनोद कश्यप भाई साहब भी हैं, उनको भी नमन। तो एक मिनट के लिए बस आप सीधे बैठे, कमर, पीठ, गर्दन सीधा, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिएगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। भूल जाइएगा बाहर की दुनिया को, तो अंतर्मुखी हो जाए। थोड़ा क्या, वैसे तो पूरा ही होना चाहिए। कमर सीधा, पीठ सीधा, गर्दन सीधा। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, then you should concentrate your breath। हमारा ध्यान हमारे श्वासों में, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। आप रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, कम बैक इन नमस्कार मुद्रा। मैं बोलूंगा, आप महसूस करिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलि रानतोष्मे आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्राशीधारिणं सहस्रशीर्षं शवेतं प्रणमामि पतञ्जलि। हरि ओम। महर्षि पतंजलि
पतंजलि को नमन करें, परमपिता परमेश्वर को नमन करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजन को नमन करें। नमन करें परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने आज का दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था हैप्पीनेस पर कि हम जीवन में खुश कैसे रहें, तो आप सभी से पूछना चाहूँगा कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, व्हाट्स आवर मोटो, हमारा क्या उद्देश्य है हमारे कोई भी काम करने का, क्या बताएंगे आप में से? जब मैं आस्किंग द फ्रेंड्स इज इंडिविजुअल क्वेश्चंस, ऐसा मत बोलिएगा कि किसी शास्त्रों में लिखा है या कोई ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना। हम जो भी काम करते, इवन आज हम यहाँ पर भी आए हैं, उस सबका उद्देश्य क्या है? बी हैप्पी और पीस। और बताएंगे अच्छा है आपने कोई हैप्पी बोला, अदरवाइज पीपल आर सेइंग पैसे के लिए, नाम और शोहरत के लिए हम बोलते हैं। चलिए आपने कहा हैप्पीनेस के लिए, मैं आपकी बात लेता हूं। व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर हैप्पीनेस, इज ट्रू और नॉट? हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं, चाहे हम बच्चों का पालन पोषण करें, अच्छा जॉब करें, या कुछ भी आप कार्य करते हैं हैप्पीनेस के लिए करते हैं। क्या ये हैप्पीनेस दूसरा दे सकता है क्या? ये हैप्पीनेस हमें दूसरा दे सकता है क्या? दे सकता है? It has to come from within. Within, but दे सकता है डॉक्टर साहब? नहीं दे सकता। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? आपने कहा कि हैप्पीनेस दूसरा दे नहीं सकता आपके वर्ड से। जब मैं परेशान होती हूं या होता हूं, बोलता मैं बोलता हूं जब ये हैप्पीनेस तुम्हारे पास है तो मैं बोलता हूं मैं आज परेशान हूं या दुखी हूं बिकॉज ऑफ। तुम्हारी उंगली किधर होती है हमेशा? मैं बहुत अच्छी हूं या बहुत अच्छा हूं, लेकिन परेशान हूं किसकी वजह से? सामने की वजह से। तो हमारी उंगली हमेशा किधर होती है? सामने की तरफ। योग बोलता है कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। योग क्या बोलता है? तुम अपनी बात करो, तुम दूसरों की बात मत करो। जब भी हम मिलते हैं तब किसकी बात करते हैं? हमेशा दूसरों की बात करते हैं। इट्स ट्रू और नॉट? तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि जब हैप्पीनेस आपके पास है, इवन हम ब्लेम किसको करते हैं? कोई कहता है पत्नी ऐसी है, कोई कहता है पति ऐसी है। समबडी पति पत्नी बोथ आर वेरी नाइस, बोथ हैप्पी, बट बेटा नालायक हो गया, बच्चा नालायक हो गया, जैसा चाहते थे वैसा वो नहीं करता। चलिए बेटा भी अच्छा हो गया, माँ बाप, फिर क्या बोलते हैं? पड़ोसी खराब है। क्या बोलते हैं? कि पड़ोसी ने नाक में दम करा। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? पड़ोसी भी अच्छा है, बोले यार रिश्तेदार दोस्त खराब। वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग ईच अदर। इट्स ट्रू और नॉट? जब हम बोलते हैं कि हम हैप्पीनेस आपके पास है, तो डोंट ब्लेमिंग अदर्स। इवन आई वाज टेकिंग वन सेशन इन कॉर्पोरेट, मेरा होता रहता है, तो उधर एक माँ बोली ये सब छोड़िए गुरुजी, पति पत्नी की बातें, बच्चों की बातें, मेरी बाई से परेशान हूं। किससे परेशान हूं? अब बताओ मालिक बाई या तुम है? तो हमारी चाबी किसके पास है? मेरे को कोई भी बाई जी, कोई भी आदमी आएगा और आपको परेशान करेगा, ये तुम्हारा स्विच किसके पास है? कि कोई भी आकर तुमको इरिटेशन करेगा और आप परेशान होंगे, तो चाबी किसके पास हुई? दूसरों के पास। तो अगर आप अपनी चाबी अपने पास रखना है, आप पानी देंगे प्लीज, पानी देंगे। तो मैं कह रहा था अपनी चाबी किसके पास रखनी है? अपने पास। लेकिन अपनी चाबी अपने पास नहीं रहती है। तो पहली बात समझ में आती है, व्हाटएवर वी डू we also happiness. This happiness nobody can give and nobody can take. Is true or not? जब तुम्हारी चाबी, तो ये हैप्पी की जो चाबी है, अभी भी बात चल रहा था, जब आप हैप्पी रहते हैं तो देखिए हम बोलते हैं नाम के लिए करते हैं, शोहरत के लिए करते हैं। यू नो सुशांत सिंह, दे गॉट नेम एंड फेम बोथ। उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस का अंदर वैक्यूम था कि नहीं था? तो दैट्स व्हाई हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड अगर आप खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, ऐसा नहीं कहना कि दूसरा है, तो कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, अपने अंदर झांकेंगे तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आने लगेगी। हम वजह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे। तो पहली बात आपके समझ, जो भी काम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं।
अच्छा, आप हैप्पी हैं या नहीं है कैसे मालूम चलेगा? आप हैप्पी हैं या नहीं है कैसे मालूम चलेगा? कैन यू एक्सप्लेन मी? हमारे एक्शन से। नहीं, इट्स नॉट ट्रू. We are accepting everything as it is. नो. आप हैप्पी हैं या नहीं कैसे मालूम चलेगा? एक्शन से नहीं हो सकता. If you're not complaining, others happy. नो, क्योंकि दूसरा खुशी दे नहीं सकता तुम लेना नहीं चाहो तो. ये बहाने हैं. if you're not complaining, मुझे कैसे कंप्लेनिंग का बात भी नहीं है. मुझे कैसे तुम कंप्लेन कर रहे हो? आई एम मीटिंग फर्स्ट टाइम विद यू, तो हाउ कैन आई से तुम कंप्लेन करते हो या नहीं करते हो? वो चाबी कहाँ है? कहाँ से दिखेगी तुम्हारी है आपकी हैप्पीनेस की चाबी आपके पास है? smile on your face. हाँ जी, Smile on your face. फेस. चलो थोड़ा शमशान घाट के पास आए आप लोग, आगे हैं. When you're peaceful. नो नो, वेरी पीसफुल का इजहार कैसे करोगे? तुम पीस में है कैसे मालूम चलेगा? मैं आई एम आस्किंग यू, आप पीस में है कैसे मालूम चलेगा? When you're calm and composed. नो नो नो, अदर एक्शन से नहीं. अदर कैसे भी एक्शन करेगा तुमको कैसे भी आएगा? So when you're calm and composed. हाँ, नो नो. सोचो सोचो सोचो. So when you're calm and composed. आप काम में हो कैसे मालूम चलेगा बेटा? When we are behaving with others. When we are behaving with others. नो, नॉट बिहेविंग. बिहेविंग से भी नहीं. by your work efficiency and effectiveness. वो तुम्हारा अपने अच्छा इफेक्ट किया उसका पता कैसे चलेगा? Depends on your mood. नो. चलिए. अच्छा, तुम किसी से मिलते हो बहुत दिनों बाद, देखते ही तुम बोलते हो ना बहुत खुश नजर आ रही है, आ रहा है, कैसे मालूम चलता है? Gestures of the best. इट्स वेरी सिंपल. मुझे पका दिया आप लोगों ने. Smile. Whatever we do, we want to happiness and after happiness become a smile. Smile. क्या होता है? तो what's important in your life? आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? Smile. स्माइल. दैट्स हैप्पीनेस. तुम हैप्पीनेस होगा कैसे मालूम चलेगा? तुम्हारा चेहरा जब मुस्कुराता हुआ होगा. It's true or not? That's why whatever we do, we want to happiness. After happiness become a smile. आप खुश, आपके मुस्कुराहट से मालूम चलता है. तो तुम्हारे लाइफ में क्या जरूरी है? मुस्कुराना. There are two kind of मुस्कुराहट, one artificial, one real. I'm asking real क्योंकि आज समय कम है. नेक्स्ट टाइम बात करूंगा बहुत रियल और नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूंगा. तो लाइफ में क्या करना है? आपका और मेरा सोचने का तरीका अलग है. आप ऐसा सोचता ऐसा काम कर लूंगी या कर लूंगा तो मजे करूंगा. मैं सोचता हूं अभी से मजे कर लूं तो क्या बुराई है? क्या सोचते हैं हम? ऐसा काम करने से मजा कर लूंगा. मैं अभी से अगर मजा करूं तो क्या बुराई है? क्या मुझे अगले पल का पता है? क्या आपको पता था कोविड आने वाला है? नहीं ना. तो डोंट थिंक मैं ऐसा कर लूंगा, मैं अभी कर लो. इसका कुछ लग रहा है क्या बेटा? आपका हैप्पी रहने का कुछ लग रहा है? इट्स योर ऑन प्रॉपर्टी. ये क्या है? तुम्हारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं है? हैप्पीनेस. इसलिए तुम बच्चे को देखो, बच्चा क्या करता रहता है? हमेशा क्या करता है बच्चा? मुस्कुराता रहता है. रियल स्माइल. और हम बोलते हैं बच्चे को टेंशन नहीं है. मैं बोलता हूँ तुमको बड़ा टेंशन है. बच्चे पे गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, उसको टेंशन नहीं है. तुम्हारे गाड़ी है, बंगला है, तुमको टेंशन है. टेंशन किसको होना चाहिए? इसलिए एक चोरी करने वाला आदमी भी क्या सोचता मालूम है? इतना सारा माल लूट लूंगा तो क्या करूंगा? मजे करूंगा. क्या चोरी करने वाला आदमी मजा कर सकता है क्या? ऑलवेज लिव इन फियर. कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले. उसका इंटेंशन क्या है? चोरी करना. वो आनंद में रहना चाहता है. अब हम मनुष्य जाति हैं तो हमारा फितरत क्या है? आनंदित रहना. इट्स योर पावर. तो आज की बात क्या करना है? हमेशा स्माइल एवरी मोमेंट, है ना. इसलिए मैं बोलता हूँ मुस्कुराता हुआ नमस्कार ऐसा बोलता हूँ. तो हम जो भी काम कर ले, कहना क्या है? बहुत आसान है ना कहना. कहते हैं ना मस्त रहा कर. कभी कभी देखा परेशान होते हैं लाइफ में, दुखी होते हैं, क्या बोलते हैं? मस्त रहा कर, दुनिया में सब चलता है. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और 2 घंटे बाद देखो खुद ही परेशान बैठा हुआ है. इसलिए कहने का कुछ जाता नहीं है. वी नीड टू साधना. अभी आप मुझे कह रही थी कि आप कुछ योगा प्रैक्टिकल कराएंगे क्या? मैं कह बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं आपको टीच नहीं कर सकता. लेकिन इसको समझो, बिना साधना हैप्पीनेस नहीं आ सकती. मैंने डू प्रैक्टिस, साधना अपने आप आती है. मतलब एम नियम की भी जरूरत नहीं है अगर तुम साधना करते हो तो. साधना मीन्स योगासन, प्राणायाम एवरीडे. योगासन क्या करता है? तुम्हारे बॉडी को प्यूरिफाई करता है. क्या करता है? बॉडी को प्यूरिफाई. बॉडी सफिशिएंट है क्या आपके लिए? बॉडी सफिशिएंट नहीं है. देन माइंड. माइंड को क्या करता है? प्राणायाम. प्राणायाम प्यूरिफाई योर माइंड. देन हमारा क्या? तन मन. दूसरा क्या है?
तन मन, तीसरा क्या है? धन, तत्तरी, धन, धन नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा को प्रिफर करता है मेडिटेशन। जब तीनों लेवल पे आप काम करते हो तब आप परम आनंद की, हैप्पीनेस की तरफ जाते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शरीर पे काम कर रहे हैं, ऐसे मन पे काम कर रहे हैं, ऐसे प्रवचन पे काम कर रहे हैं। तो चलिए, तो मैं कहता हूँ कि ऑलवेज ये तुम्हारे पास तुम्हारी कुंजी है खुशी की, तो खुश रहना है। तो 2 मिनट हम लोग मेडिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे हंसता हुआ। कैसा कैसा मेडिटेशन करेंगे? हंसता हुआ, स्माइल नहीं बोला मैं। कैसा करेंगे? हंसता हुआ। अच्छा, आप लोगों को हंसना आता है क्या? हंसना आता है आप लोगों को? हंसना आता है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हंसना आता है? अच्छा, हंसेंगे क्यों बता दो मुझे। हैप्पी। और बताओ हंसेंगे क्यों? हंसेंगे क्यों? बोलिए। अच्छा, अभी मेरे साथ बात कर लो, बाद में बतिया लेना भैया। हंसेंगे क्यों? ये मौका मिलेगा नहीं, बाद में बतियाना खूब, 2 बजे बाद, है ना। हंसेंगे क्यों? हाँ जी, खुशी के लिए। और बताइए, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच जाएगा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच जाएगा। और हाँ जी, तुम शर्माता बहुत है भाई, बोलो। नेचुरल ब्यूटी आएगी, वेरी गुड, वो चाहिए। और स्ट्रेस फ्री, और बेटर हेल्थ। और हिमांशु भाई कुछ बोलेंगे आप? हंसेंगे क्यों? क्योंकि आपका मेहरबानी, आप बुलाते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। स्ट्रेस फ्री, हेल्दी। और डॉक्टर साहब, मैंने क्या प्रश्न पूछा था? हंसेंगे क्यों? आपने मुझे फायदे बता दिए। आई आस्क्ड यू व्हाई वी विल लाफ, यू टोल्ड मी बेनिफिट ऑफ लाफिंग। क्या पूछा था मैंने? हंसेंगे क्यों? आपने मुझे क्या बताया? चलो अच्छा, फायदे तो बताया कम से कम। तो हंसेंगे क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं क्यों हंसे। अगर तुम हंसते भी हो तो लोग बोलते हैं क्यों हंसती है पागलों की तरह दिन भर, क्यों हंसता है पागल, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वी कांट लाफ। ये सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अभी भूल जाना लोगों को, इतना अच्छा प्रोग्राम से वी विल लाफ लाउडली, अनकंट्रोल, तब तक जब तक तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो, तुम्हारे गाल दर्द नहीं हो। रेडी फॉर लाफिंग? लेकिन हंसोगे क्यों? हंसोगे क्यों डॉक्टर साहब जी? या मेडिटेशन है। हंसेंगे क्यों? लोग बोलते हैं क्यों हंस रहा है, तो हमको क्या हुआ भाई, नाराज हो गया? हेलो, यस। लोग बोलते हैं क्यों हंस रहा है, लोगों को रीजन चाहिए। मैं तो नो रीजन फॉर लाफिंग, बट आई वांट टू रीजन। यहाँ आया हूँ तो चाबी देके जाता हूँ हंसने की। ऐसी चाबी देके जाऊंगा, आज के बाद तुम कम अकेले कमरे में बैठे बैठे हंस सकते हो। किस किस को चाबी चाहिए? जो ऑनलाइन जो भी है, यूट्यूब में, फेसबुक में जुड़े हुए जो यूथ हमारा जो चैनल है, उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जब हंसना हो तो नो नीड टू गो हियर एंड देयर। तो सब तैयार हैं? चाबी किस किस को चाहिए? बाकी को नहीं चाहिए हंसने की चाबी? वो बड़ा सोच रहा है, ऐसे हाथ खड़ा करता है तो पूरा ले जाएगा, ऐसा खड़ा करना है। हिमांशु भाई दे दूं चाबी? ओके, सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ कीज फॉर लाफिंग या स्माइलिंग। हजारों चाबियां, एक चाबी दे देता हूं, अगली बार कभी मुलाकात होगा दूसरी चाबी भी दे दूंगा। इस दुनिया में खरबों खरबों लोग आए। कितने लोग आए? खरबों खरबों लोग आके रोली चले गए, और खरबों खरबों लोग आएंगे। इट्स ट्रू और नॉट? लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। तो क्यों हंसोगे तुम लोग आज के बाद? कोई बोले क्यों हंस रही है, क्यों हंस रहा है, तो सब माएँ क्या बोलेंगी? क्योंकि सब माताएं देवी का रूप हैं, सब माएँ क्या बोलेंगी? मेरी जैसी खूबसूरत महिला कोई नहीं। क्या करेंगी? हाथ रख क्या बोलेंगी? और जितने भी भाई बंधु क्या बोलेंगे? मेरे जैसा भाई दुनिया में, मेरे जैसा आदमी दुनिया में, और हो तो मुझे बता देना, मैं 50 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। हाँ, सच्ची मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिल जाए। तुम हमेशा दूसरों को देखते हो, और योग बोलता खुद को देखो। योग क्या बोलता है? कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, स्वयं को देखो। हम किसको देखते हैं? हमेशा दूसरों को। तो आज के बाद तुम्हारे जैसा कोई मिल जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा। तो वी विल लाफ लाउडली एंड अनकंट्रोल। क्यों हंसोगे? क्या बोलोगे? हाथ ऐसे रखोगे और क्या बोलोगे? अच्छे हंसते हो तो बोल भाई मेरे
मेरे जैसा कोई नहीं। और इतना हंसना कि तुम्हारा गाल दर्द हो जाए, और उसके बाद हंसने के बाद 2 मिनट आंखें बंद रखेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट लाफिंग, शुरू हो जाए डॉक्टर साहब, चलिए शुरू हो जाए, हंसिए जोर से जोर से। इस पहली कॉलेज में मालूम चला जब इवेंट हो रहा है और हिमांशु जी करा रहे हैं, इतना धीरे, जोर से सुना नहीं मैंने। हंसलो हंसलो। आप नहीं हंस रहे? बोले आपका माइक से जोर से हंसते हैं। बाबा हंसो हंसो जोर से, मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले जोर से आवाज आने दो। मंजू भाई सब पिता बाद में पहले हंसते हैं। Now close your eyes. Close your eyes. देखिए बड़ी बड़ी मजा है। मैंने हंसना बंद किया क्या? हंसना मना किया क्या? मैंने बोला क्लोज योर आइज, स्टॉप द लाफिंग। अब आंखें बंद करके हंसो, कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसा मौका मिलेगा नहीं बोलना कोई जयपुर से योगा गुरु आए थे, बोले आंखें बंद करके हंसो, लास्ट मोर एंड मोर। Don't open your eyes just few minutes मेरे मित्र, फील करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से बात करने से अनुभव नहीं होता, इसलिए laugh yourself, laugh yourself, nobody likes you, you are a wonderful person, so you can say I am a wonderful lady or wonderful gentleman। अभी भी आपको हंसना है तो हंस सकता है, लेकिन आंखें कोई नहीं खोलेगा, बैकबोन स्ट्रेट। 1 मिनट भी बोलो ना आंखें बंद करें तो आदमी नहीं करता, सोचता है क्या करना है, फिर बोलता है सुकून चाहिए। सुकून कहां से आएगा? क्लोज योर आइज, कंसंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन एंड कंसंट्रेट योर बैक, यू आर स्ट्रेट और नॉट। डोंट सिट लाइक अ ओल्ड पर्सन, सिट लाइक अ यंग, कीप योर चेस्ट ब्रॉड लाइक हनुमान जी, छाती फुला के बैठिएगा और चेहरा खिला हुआ। अभी भी हंसने का मन हो हंस लेना, ये मत सोचना पड़ोसी क्या बोलेगा, पड़ोसी को मैं देख लेंगे। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट्स योर लाइफ, लाफ ऑन योर ओन नॉट अदर। आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल जहां आप अपने लिए हंस सकते हैं। आप हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं। Whatever we do, we want to happiness, and our happiness become a smile. It's a very important your smile. Don't miss it. ऐसा करने के बाद मुस्कुराऊंगा नहीं, अब इससे मुस्कुराऊंगा, बाकी मैं देख लूंगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लें, उन्हें अच्छी तरह से गर्म करेंगे। Rub your palm each other, let them warm. आंखें बंद भी रखिएगा, just 1 minute more. पड़ोसी छोड़ के नहीं जाएंगे दोस्त। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हम हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। इसी शांति और आनंद को अपने तन और मन में महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता और नमस्कार स्वीकार करें। आपके जीवन का हर पल हर क्षण ऐसा एक खिला खिला रहे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार मंजू भाई आपका, और आपका आपने मंच हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
overwhelmed, honored, excited with ha ha ha. Thank you so much, sir. And wonderful session. सभी को अच्छा लगा होगा और सभी refreshed हो गए हैं. Even I am feeling refreshed. Thank you so much. Now the next speaker is Miss Nandini Tripathi, Director of Program Implementation, Global Interfaith WASH Alliance. She is from Parmarth Niketan Rishikesh. Again, connecting all people globally. She is from Lucknow and serving at Parmarth Niketan, serving whole world together on a single platform. So I would like to invite Miss Nandini Tripathi virtually to address the audience. Miss Nandini. And then I told for 10 minutes, then there is Gayatri Deviji, then you can talk or I just yeah, want to request they're gonna have me next. So I would like sorry. that would be wonderful. Sorry, I don't hear very well your voice. Namaste, namaste. So much. Let's all close our eyes. Hands in prayer at heart center. हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास में रख ले और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, followed by Shanti. We'll chant Om together 3 times, followed by Shanti 3 times. Take a deep breath in, लंबी श्वास अंदर लीजिए. धीरे धीरे उसे जाने दे. Let's all close our eyes. धीरे धीरे उसे जाने दे. Take another deep breath in. एक और लंबी श्वास अंदर. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Shri Guru Namaha. All together, सभी साथ में. Om.
When you're ready, rub your palms. हथेलियों को गर्म करेंगे. आंखों के पास ले आए. Bring it to your eyes. So it's so wonderful to join this International E-Yoga Conclave with the Youth News Online. And it's a wonderful joy to see Himanshu ji and Alankrita ji doing such a beautiful job. Delhi University में जो सारे participants हैं, सभी का अभिनंदन. This is the second day of the conclave और आप सब हमारे साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. हम वहाँ पे फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए. काफी सारी यहाँ पे योगा दिवस की तैयारियां और हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, पूज्य साध्वी भगवती जी जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, उनकी बहुत ब्यूटीफुल बर्थडे सेलिब्रेशंस अभी खत्म हुए हैं. तो काफी सारी व्यस्तता की वजह से I was not able to physically join you, so apologies for that. But I welcome all of you to the banks of Mother Ganga, to Paramath Niketan Rishikesh, and many people call Rishikesh the yoga capital of the world. In fact, people from all across the world flock to Rishikesh, flock to the banks of Mother Ganga to practice yoga, to imbibe yoga, to know what yoga is, because there's something so beautiful about this sacred space. I mean, Pura Bharat is known for yoga and for giving this beautiful, the heritage of India, the heritage of Bharat is really our yoga, our sacred vidya that we have, and this wisdom that is not just for India but for the world, and it has really transformed people from across the world to not only know about the world around them, but to know about the world inside of them. And that is what my journey of yoga has been. I was born and raised in Los Angeles. मैं पली बड़ी अमेरिका में थी और उन्होंने कहा कि लखनऊ से मेरा परिवार है. जी बिल्कुल सही है. But मैं पली बड़ी Los Angeles में हूँ. बचपन से I was in LA and I went to school there. My family, extended family, is in India. In roots are Ayodhya, Gorakhpur, Banaras, and Lucknow. So definitely very much rooted in India. So I came about 12 years ago and I was on the search of yoga, and yoga brought me to India, and that search brought me to the banks of Ma Ganga. And here I am in yoga, living, serving as much as I can. And I've been very, very blessed to have this experience. और मुझे लगता है कि जैसे कल के कॉन्क्लेव में मुझे सौभाग्य मिला ज्वाइन करने के लिए, और सुबोध तिवारी जी ने बहुत प्यारी बात बोली कि 5 घंटे you can speak 5 hours about yoga, but you won't get the experience of yoga. And so the experience of yoga happens only with practice. And I welcome all of you that maybe through all of these speeches, this conclave, you might be inspired to start your journey of yoga, or to recommit yourself to your journey of yoga, to your path of yoga, because the experience, the abhyas, the practice, the application is really what matters. And I think that that's really important. And then the other piece that I remember from yesterday with Vijay Swamiji's speech about, he said Maya or Kaya. He said Maya or Kaya के लिए yoga के पास जरूर आइए, लेकिन Maya और Kaya से ऊपर भी हमें जाना है. And yoga is so much beyond just Maya and Kaya, the body and the illusions of the world. And that having material possessions is not against yoga in any way, but just to not hoard for them. And he says, trying to fill our shelves, is trying to get more and more and more, but at the expense of emptying ourselves. And that is, I think, what the pandemic has taught us, that we here are in the 21st century with big buildings, big malls, fantastic infrastructure, amazing technological progress. And yet,
this virus has put us all in band kamre mein. And in those closed doors of our rooms or our homes, we don't know hame apne saath kaise jeena, how do we live with ourselves? And that had become the challenge of this generation, is how do we learn to live with ourselves? And yoga teaches us that. It teaches us how to live with ourselves, how to be in joy with ourselves, with our physical presence. And so I think it's really very important that we recommit ourselves to yoga, to be on this path, and to learn this technology, this philosophy, this vidya, this wisdom, and apply it in our lives, because it's really the need of the hour. And you know, through these speeches, you'll get so much. But for my personal experience, all I can say that yoga has given me a new life, and it has allowed me to learn what it is to be in a state of balance. And I think that that is the most important definition for me of yoga, because you know the Patanjali Yoga Sutras speak about yoga chitta vritti nirodha, right? The Bhagavad Gita speaks about samatvam yoga uchyate, that equanimity is yoga. Yoga karma shukoshalam, that excellence in our karma, in our actions is yoga. The skill in our action is yoga. So all of these definitions we have, it's not definition of I can bend my nose to my knees, mere naak mere ghutnon ko chhu leta hai, yeah, I'm able to do shirshasana, that I'm able to do a headstand, and then I'm a yogi. No, this is not the definitions that are in our scriptures. So it's really, really important that we learn the actual definitions, and then we reflect upon them and we apply them. And I just would request all of the speakers on Zoom, if you can mute your login, that would be wonderful, because a number of you have not muted. So just request if you could mute. So coming back to the definition of yoga, I think it's really, really important that we look at what it means to practice yoga. And I feel like just Sabhi Bhagwati ji spoke so beautifully about, you know, freedom from suffering, freedom from pain is also the path of yoga. And of course, when we are in the world, there is bound to be suffering and pain. But how do we take that pain and not lead it to suffering? How do we learn how to manage the mind, the body, in such a way where we are not affected? We're not merely, you know, like remote controls. People press a button and we react. People do something, situations happen and we react. In fact, we are anchored and grounded such that no matter what happens, हमें उतना असर नहीं होता। हम अपने में इतने मजबूत हैं कि सिचुएशन या लोग या चीजें हमें उतना अफेक्ट नहीं करती है। जैसे साधु जी ने कहा कि इतनी 5 क्लेशस है, ये क्लेशस से ऊपर हमें कैसे उठना है। तो हम कई बार सोचते हैं कि आत्मा से जुड़ने के लिए we have to somehow transcend to reach that spirit. And for me, my personal experience has been that through the practice of asana, through the practice of pranayama, through the practice of dharana, that we're actually able to sink into, not necessarily rise above, but sink into a level in which we are balanced, we are in union. And that asana and the pranayama and the dharana, these were technologies that our rishis had given us, tools that our rishis had given us. And that if we apply them correctly, we will reach to the level of dhyana and samadhi. That those things were not separate from, it's not yoga beyond the asanas. Because I felt that with asana practice, with pranayama practice, we are actually able to reach deeper levels within ourselves. Because how we experience the world around us is through this body. We are not the body, but we have a body. And so how do we manage the body and the mind? Because we are also not the mind, but we have a mind. And we have the kleshas, and we have our ego, and we have all these things. लेकिन वो सारी चीजों को लेकर के हमें कैसे
वो अनुभूति एक्सपीरियंस करनी है कि हम आत्मा है, दैट ये सारी चीजें हमारे पास है लेकिन हम इससे लिमिटेड नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है आसन की, प्राणायाम की, दिस टेक्नोलॉजी, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, this technology Thank you so much, Ms. Nandini Tripathi, for your awesome speech. जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे ऑनलाइन मोड पे चाहे ऑफलाइन मोड पे, आप सभी को इंटरनेशनल योगा ई कॉन्क्लेव का सर्टिफिकेट मिलेगा आज ही, क्योंकि आज फाइनल डे है प्रोग्राम का। तो आप सभी लोग यहाँ पे रुके रहिए जब तक प्रोग्राम चलेगा। और आध्यात्म और संस्कृति के लिए अगर कोई अपना इंजीनियरिंग का जॉब छोड़कर और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश करे, तो हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, आचार्य शांतनु जी महाराज का, अ वेरी रिनाउंड कथावाचक who is an engineering graduate and who left his beautiful job all to keep alive Bharatiya Sanskriti and Srimad Bhagavad Gita in everyone. So I would like to call virtually Acharya Shantanu ji Maharaj to please address the audience. सभी को जय सिया राम। योगा ई कॉन्क्लेव सभी प्रतिभागियों का व आयोजकों का अभिवादन। पूर्व वक्ताओं को भी मैं सुन पा रहा था। वास्तव में हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा व ऋषि परंपरा के द्वारा दिया हुआ यह अद्भुत विज्ञान है जिसे हम सब योग कहते हैं। सामान्य रूप से 3 प्रकार से हम सब इसको समझते हैं। युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने। योग के अर्थ में भी, समाधि के भी अर्थ में भी और संयमन के भी अर्थ में। गीता में और पातंजल योग सूत्र में ये 2 हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम सब योग की परिभाषा, योग की महिमा व योग प्राणी मात्र के लिए है, हम सबको ज्ञात होता है, बोध होता है। पातंजल योग सूत्र व गीता, इन दोनों के अधिकारी में थोड़ा भेद है। वहां पर योग का अधिकारी पातंजल योग सूत्र में थोड़ा कठिन है। मूढ़ और क्षिप्त ये योग का अधिकारी नहीं हो सकता है। लेकिन जो गीता का अधिकारी है वो प्राणी मात्र हो सकता है।
तो योग प्राणी मात्र के लिए है। और भगवान कृष्ण ने जो गीता में अध्याय दूसरे के 48 और 50 ये 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें 48 में योग की परिभाषा बताई गई और 50वें श्लोक में योग की महिमा बताई गई है, क्योंकि उसको परिभाषा करने में कदाचित कठिनाई आ सकती है। योगः कर्मसु कौशलम ये परिभाषा नहीं है, ये महिमा है योग की। समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा है। समता, इसको हमारे ऋषियों ने बार बार अपने ग्रंथों में उच्चरित किया है, बार बार बोला है। समता समता समता, सम हो जाना ये योग है। और यदि ये अर्थ करेंगे कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो कई बार ये भी अर्थ निकल सकता है कि यदि कर्मों में कुशलता है, जिसको स्किल कहते हैं, तो बहुत सावधानी से चोरी करने में कोई व्यक्ति यदि सफल हो जाए तो वो भी अपने को योगी मान सकता है कि मैं भी योगी हूं, मैंने बड़ी सावधानी से चोरी कर ली अथवा किसी को ठग लिया, ये अर्थ निकल के आएगा। या इसके इतर भी अर्थ निकल सकता है, विहित कर्म कर देंगे हम तो वह योग हो जाएगा। वास्तव में किसी भी प्रकार के कर्म में बंधना ये योग नहीं है, मुक्त होना योग है। हमको मुक्त हो जाना है, कर्मों के बंधन में बंधना योग नहीं है। तो इसका अर्थ जो निकलता है वो ये है, कर्मों में योग ही कुशलता है। हम कोई भी कर्म करें उसमें जब योग बुद्धि आ जाएगी, अर्थात समबुद्धि आ जाएगी, अर्थात समता आ जाएगी, समत्वम योग उच्चते, यह परिभाषा हमारे कर्म में घटित होने लगेगी, हमारे कर्म में व्याप्त होने लगेगी, वो वास्तविक योग है। और उसी योग की महिमा को भगवान ने गीता में बताया है। और गीता योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के विराम में स्पष्ट लिखा है योग शास्त्रे। गीता योग शास्त्र है, प्रयोग शास्त्र है, जीवन में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो 2 प्रकार के योग दुनिया भर में व्याप्त हैं, एक है शारीरिक, जिसे हम व्यायाम इत्यादि से भी जोड़ते हैं, जो इस समय अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन मानसिक रूप से जिस योग की आवश्यकता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मन से शरीर चलता है और इस समय दुनिया भर में मानसिक प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि योग की नितांत आवश्यकता प्राणी मात्र को हो रही है। मानसिक प्रदूषण का उदाहरण अभी आप सबने पूरी दुनिया में वो समाचार वायरल हो गया कि एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसकी मां ने उस बच्चे को पबजी खेलने के लिए मना कर दिया। हत्या करके 3 दिन तक शव को बचाकर रखा, छिपाकर रखा, पुनः झूठ आदि बोलकर उस घटना का रहस्योद्घाटन हुआ। अब मानसिक प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच गया है कि एक अवयस्क पुत्र अपनी मां की हत्या कर देता है। मेरा मत है इस मानसिक प्रदूषण से दूरी तभी हो सकती है जब हम योग के उन स्वरूपों को, उन आयामों को, उन उपायों को अपने जीवन में ले आएं, हमारे जीवन में ध्यान प्रवेश करे, हमारे जीवन में व्यायाम प्रवेश करे, हमारे जीवन में
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो 8 अंग योग के महर्षि पतंजलि ने बताए हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि जब तक मन का प्रदूषण नहीं स्वच्छ होगा, मन का प्रदूषण नहीं साफ होगा, तब तक हमारे शरीर का भी प्रदूषण समाप्त नहीं होने वाला है, हमारे तन का प्रदूषण नहीं समाप्त होगा। और जब तक तन का प्रदूषण नहीं समाप्त होगा हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थ रहेगा और अस्वस्थ शरीर से किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता है, योग आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार नहीं हो सकता है। इसलिए योग के दार्शनिक स्वरूप को समझते हुए, जीवन में समता लाते हुए, प्राणी मात्र में समता लाते हुए, और मुझे तो लगता है यदि भारत के इस योग रूपी ज्ञान विज्ञान को पूरी दुनिया आत्मसात करे, एक पक्ष से तो आत्मसात किया है, जो शारीरिक पक्ष है, जो व्यायाम का पक्ष है, पूरी दुनिया ने आत्मसात किया। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के 200 से ज्यादा देश इसको स्वीकार किए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर वो लोग मना रहे हैं। लेकिन जो इसका मानसिक पक्ष है, वो यदि इसका जो दार्शनिक तात्विक पक्ष है योग का, यदि वो हम सब स्वीकार करने लगे कि कर्मों में योग ही कुशलता है, हमारे कर्म में जब योग आ जाएगा, हमारी बुद्धि में समता आ जाएगी, हमारी बुद्धि में समत्व आ जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुनिया भर के मानसिक प्रदूषण से यदि मुक्ति चाहिए तब भी हमको योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। इतनी विषमताएं पूरी दुनिया में आ चुकी हैं अनेक प्रकार की, और वही सारी समस्याओं के मूल में है, विषमताएं ही सारी समस्याओं के मूल में हैं। और उन विषमताओं को समाप्त करने के लिए समता अनिवार्य है, और योग ही समता है, अर्थात समता ही योग है, ये दोनों एक ही हैं। तो जीवन में समता आए, मन में समत्व आए, प्राणी मात्र में समभाव आ जाए, ताकि हम सब अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखते हुए, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखते हुए, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना हम सब करें। हमको आप सब ने योगा ई कॉन्क्लेव में वक्ता के रूप में निमंत्रित किया। चूंकि कम बोलना कम अभ्यास में है, हम सब बहुत बोलते हैं, कई कई घंटे बोलते हैं, यहाँ अनेक वक्ता हैं, सबके समय निर्धारित हैं। इस कारण से मैं संक्षेप में योग की महिमा का गायन आप सबके सामने किया है, उसका उच्चारण किया है। तो पुनः पूरी दुनिया भर के लोगों को योग, आगामी आने वाले योग दिवस की शुभकामनाएं। योग के दोनों पक्ष को हम सब सहर्ष स्वीकार करें, शारीरिक पक्ष को भी, मानसिक पक्ष अर्थात आध्यात्मिक दार्शनिक तात्विक पक्ष को स्वीकार करें, और वास्तव में योग ही पूरी दुनिया भर की समस्याओं के समाधान का कारक बन सकता है। इस दृष्टि से योग की महिमा को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। जय सिया राम। धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी शांतनु जी महाराज, कथावाचक। और इन्होंने जो बात कही, अगर हम इसे ज़िंदगी में उतार लें, बैलेंसिंग आवर लाइफ्स, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें। छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन हो रहा है, हर एज को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कैसे ख़त्म करें। थ्रू योगा, प्राणायाम, बैलेंसिंग एंड बेसिकली बैलेंसिंग द लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग यही सिखाता है। So proceeding next, we have
Amadio Bianchi. Amadio Bianchi, he is president of World Movement for Yoga and Ayurveda of European Yoga Federation, and the topic on which he will be speaking is Swasth, being oneself. So I would like to request Amadio Bianchi ji to please come up virtually on the stage to address our audience online and offline mode. World Movement for Yoga and Okay, good. As I was telling, I am representative. I want to represent United Consciousness here, and I am president of European Yoga Federation. I prefer speaking Italian so I can diffuse the record in Europe too after. So I have my interpreter here, that is Amelia Devi Rossi G. So we start. I tell a few words about Swastha, and then I give the Babadnan, then other representative of Europe. Ok, Amelia? Allora ringraziamo veramente di vero cuore l'organizzazione per averci invitato. Thank you very much for the organization for having invited us. Ringrazio personalmente Iman Shu, con cui ho sempre mantenuto contatto. I personally thank also Mr. Iman Shu that I always been in contact with. Avverto già il nostro rappresentante della Turchia che è pronto, Babadnan, che parlerà dopo di me. And I already acknowledge Yogi Babadnan, who will speak just after me. Dalla Turchia, direttamente dalla Turchia. And he's speaking to us directly from Turkey. Ecco, poi farò parlare Amy Belesi o Gayatri Devi G. And then I will request Amy Blesio G, Gayatri Devi. Ok, io voglio solo dire due parole su una parola che ritengo indicativa e importantissima. I just would like and spend few words about a word which I think is one of the most important one. La parola salute in sanscrito. The word wellness in Sanskrit. Che ci dà una direzione, un'indicazione precisa. That will guide us and allow us towards a direct direction. Di che cos'è veramente la salute? On what about health? Swastha, che significa essere nel proprio sé. Swastha, that means being in its own self. Perché poter stare nel proprio sé è ammesso solo quando abbiamo risolto tutti gli altri problemi. Because being in swastha, in the self, is like to be inside when everything else has already been solved. Significa che la nostra salute è risolta, che tutte le nostre emozioni sono sotto controllo, che la mente è sotto controllo per poter essere nel proprio sé. Because means that our health is being resolved, that our emotions are under control, our mind is well organized, and all other levels in our life are well planned and organized. Il sé che questa cultura mi ha insegnato che è l'unica cosa reale. The self that this amazing culture has been teaching me, the self is the only reality. Perché facciamo un semplice ragionamento, spesso usiamo la parola mio, tuo, suo. Let's make just a very simple discussion. We always use words and we always refer to this is mine, is, hers, stuff, and so on. In effetti, nulla è nostro. L'uomo non possiede niente. But as a matter of fact,
nothing, it really belongs to us. Nothing really is from us. Persino quando nasciamo e prendiamo la prima boccata di ossigeno, che facciamo il primo respiro. If we think about just when we are born and at our very first breath we take in, stiamo prendendo in prestito qualche cosa quando nasciamo. We are requesting and asking for something in loan for ourselves. In effetti funziona così: quando nasco inspiro, quando me ne vado espiro, perché devo rendere qualcosa che ho preso in prestito per tutta la vita. And in fact, it works just like that. At our first breath, we breathe in, we take something in. But then when we leave this world, we just release, we exhale, we let it go out, as we have to give and leave something that we own at first. Pensiamoci, nulla ci appartiene. Let's very deeply think about it. Nothing really belongs to us. Non è nostro, il nostro corpo non è nostro. The body is not really our body, ours, doesn't belong to us. Quando noi ce ne andiamo, se ne va solo il sé, il corpo rimane qui. When we leave this planet, just the self leaves, but the body stays here, remains here. La terra che ci hanno lasciato i nostri genitori rimane qui. The land that our parents and relatives gave us, this piece of land will remain here. La casa, la macchina, il telefono, tutto rimane qui e se ne va soltanto l'unica cosa reale, il sé. So then when we leave, even the house, the car, anything that belonged stays here, just the self, departure. Quindi lasciatemi dire due parole anche sulla guerra di questi giorni in Europa. So just allow me to spend a few words about the war that is running in Europe in these days. Voglio parlare dello stato di ignoranza nel quale a volte ci possiamo trovare. I want to speak about the ignorance, this state when sometimes we are in. Queste persone che lottano per il possesso di una nazione e poi non capiscono che lasceranno tutto qui e non è veramente loro niente. These people that they are fighting for just a piece of land, for owning a piece of land, that as a matter of fact, they will leave it once they will leave the body, they will leave this planet. Mi piace molto il detto Tat Tvama, sì, tu sei quello, tu sei il sé. I really like this Mahavakya, the Tat Tvama, see, you are that, thou that art. Tu sei il sé. You are that, you are the self. Per favore, meditiamo sul significato di questa parola che ci porta verso la salute vera, la salute dell'anima, la salute dello spirito, swasta. So please, let's meditate about that as it will lead us towards the real state, the swasta. Io vorrei anche terminare con queste poche parole, avrei tanto da dire, ma so che ci sono tante persone che devono parlare. I just would like to finish with these few words. I would like to say so many things, but I know many people have to talk.
Grazie una volta in più agli organizzatori, a tutte quelle persone che organizzano per portare lo yoga nel mondo, che è una disciplina di pace, che è una disciplina di benessere, che ci fa incontrare il nostro sé. I really would like to thanks once again the organizers, has organizing this meeting, these events, allowed to bring yoga into everywhere, spread yoga everywhere in the world. And yoga is a discipline about peace and founding of wellness, the founding of the self. Namaste to all. Now I give the floor to Baba Nanji from Turkey. He's our representative from Turkey. He's a very good person. Please, Baba Nan, floor is yours. Namaste. Thank you very much. I want to thank dear brother Amadio Swami Satyananda for inviting me for this speech today, for a short speech. Thank you, Mr. Amadio Bianchi. Now I would like to call virtually Dr. Emi Blessio, yoga expert from Italy. हमारे दो और स्पेशल गेस्ट यहाँ पे आ गए हैं, सचिन जी फ्रॉम पतंजलि एंड मिस गरिमा भंडारी, योगा एक्सपर्ट। तो मैं इन दोनों लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ इन आवर इंटरनेशनल योगा ई-कॉन्क्लेव। एमाडियो बियांची जी ने क्या कहा, कोई बताएगा ऑडियंस में से? थैंक यू बोला था। बिफोर दैट ही सेड, जो मोरल ऑफ द स्पीच था वो ये था बेसिकली कि हमारा कुछ भी अपना नहीं परमानेंट, हमारा बॉडी भी अपना नहीं, सिर्फ हमारा जो है वो वन सेल्फ, वो आत्मा है। तो कभी मिलिए खुद से। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तरह तरह के लोगों से, चाहे कॉर्पोरेट प्रेशर हो, चाहे स्कूल का प्रेशर हो, चाहे कॉलेज का प्रेशर हो। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। उसके बीच हम कभी खुद से नहीं मिल पाते। वो फुर्सत के पल कभी कभी ही आते हैं जब हम खुद से खुद मिलते हैं। तो दैट इज बीइंग स्वस्थ एंड बीइंग वन सेल्फ, जो मिस्टर एमाडियो बियांची ने कहा। ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज डॉक्टर एमी ब्लासियो कनेक्ट करने में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। So I would again like to welcome Dr. Emi Blasio, yoga expert all the way from Italy. Okay. No, he's Baba Nan now. He's Baba Nan now. Okay. Thank you, Swamiji. I want to say
Now, excuse me, am I speaking or? Yes, sorry all. So now is Baba Nan, after is Gayatri Devi Ji, after is Andre, after is Sukadev. Okay, it's clear for all. Now is Baba Nan. Thank you so much. What I have been trying to say that it is very fine to speak, to preach about yoga, Sufism, mystic teaching in the whole world, and it is helping the world society to have an idea and to start to be on the path of spirituality and new age, which is fine. But for me, this is not enough because the world is going through destruction. We have destroyed the world. Humanity has destroyed the nature and itself. So we have to act quick and more productively. What we do, we have to put more weight on more, not speaking, but rather go to karma yoga, create an army of karma yogis in the world. Example, when we have, in the past, the leader has created animosity with the neighbors. Every leader told his people that our neighbor is enemy, so we have to attack and take their land and money. We have to change that mind, attitude. So what we do, we create an army of against this idea, army of karma yoga. Example, we can create an karma yogis army from Turkey to Greece because they have been in the history, we have been enemy, supposedly. Of course, we were not enemy, but the leaders told we are enemy. So we have to create karma yogi army to go to Greece and serve the people in Greece, help the people who are in need, show them that there is no animosity between Greeks and Turks. And then another army should come from Greece to Turkey and do the same. And another karma yogi army should come from Israel to Arab countries. Another army of karma yogis should go from Arabic country to Israel, and another army from Europe should go to Russia and other countries, but all karma yogis. When I mean army, the word should not be misunderstood. I mean a big crowd of karma yogis who are organized by rich countries, rich organizations, who have possibilities to take some action for the peace of the world, for the world to reach a new civilization, to get out of this chaos of the world. We need to act more seriously as karma yogis than more preaching. Preaching is wonderful, but we have to act physically. Physically, I call karma yoga. So if we can move this idea as karma yoga from whoever has possibility, more rich countries has possibilities to go to all these weak countries who need help. We have to make a project for the world. The investment should not be more on rich countries' investment. The investment should think that the whole world is one country, and wherever in this country, any part of the world needs investment, the whole investment should go to that part of the world without borders, without thinking countries, no religion, no any division. We are all one family, and the world is one house. We have to act quick. We have to act more consciously. We have to take responsibility. I am just don't want to make that talk longer. The idea for me is we have to act quickly to stop this destruction of the world. We destroyed our world and ourselves, and this we can do it with the karma yogis and spread all around the world. Thousands of people should go from each country to another country, awaken the people, tell them there is no enemy. There is no enemy. We are all human. This has to be created. This is my opinion. I would like to thank you for listening to me today. This is more important for me. Responsibility for humanity to take action in the thought and all we can do for humanity and the nature, to protect the nature. Thank you. Baba Nan, thank you to you. So kind. I know that you are so busy. I thank you for time for that. And now I give the floor to Gayatri Devi Ji. She can start, open your microphone and start. I thank Amadeo Surinanda Ji and also the organizers for I'm very honored to be invited in this great event.
and I offer a spiritual greetings to all the participants. Today, my topic is yoga is everything, but not everything is yoga. The yoga that I propose in my schools is a yoga paripurna, a yoga of the origins, a traditional depth, and which can, yes, evolve, but without losing to peculiarity and its essence. Paripurna is a yoga with roots and a conscious substrate. I'll give an example to clarify. Any splendid flower, when cut off, is rootless, and the end becomes just a sterile, dry thing. On the contrary, a plant with good roots can grow up and give its fragrant flowers and tasty fruits. A yoga with good roots is obtained through the parampara, the traditional spiritual tutoring in which the teachings, the tradition are transmitted continuously from guru to chela. But what is yoga? We talk a lot about yoga, but do we really know what yoga is? It is difficult to get an idea in this time of that it is important, irreplaceable, and immensely precious as yoga is. In the current common imagination, we only have the message of a yoga of physical position, and often we don't go beyond that. Therefore, my interest, given my 50 years of experience in yoga, is don't lose the value of the traditional yoga, which has consistency and which can evolve and made to evolve without lose its peculiarity. Yoga is a science that gradually changes with awareness ourselves and the surrounding environment around us. We live in an ocean of air, and our air is in the contact with everything and everybody. It surrounds us. We are involved in the world and like drops of an ocean, we emerge into it, in the world. How can we feel separated, divided? Mahatma Gandhi said, be the change you would like in others. And even more clearly, I cannot hurt you without hurting myself. It is clear that he had perceived it to belong to the world. And this is also a message of yoga that is worth following. The way in the path of yoga can seem difficult because it is not easy to improve in depth. Sometimes you lack the courage of or the desire. But we have to persist. The improvement is a value, not a demerit. Yoga produces that awareness which allows you to see the world with different eyes, more tolerant, more respectful, more full of love. Because everything that surrounds us is part of a single great soul, of a unique, immense breath. Let's start from the beginning and see some detail on classic yoga. Yoga is one of 6 points of view, darshan, the orthodox system of Hindu philosophy.
but at the same time, it includes all of them. It finds its roots in the most recent codification of the Yoga Sutras, the Maharishi Patanjali. There are many interpretations of the classification of aspects of the various types of yoga. You know that the characteristic of modern society is a hurry and superficiality, which are precisely what makes that small part of this profound science be taken, used, and dilated until they lose their to disciples. Everybody knows that Gu means darkness and Ru means light. Therefore, the Guru would be the mean, the instrument that remove the darkness and bring the light into the life of the disciple. The acceptance of diversity is a value, like a white light that illuminates all things and increases their color, making the object that it touches shine. On the contrary, an uniform color light flattens the difference, and all in this surround. Therefore, the greatness of yoga is to enlighten the mind. In the Bhagavad Gita, 3 important traditional lines are clearly mentioned: Bhakti Yoga, the yoga of devotion; Karma Yoga, the yoga of the action without attachment to the result; Jnana Yoga, the yoga of knowledge. Later, Raja Yoga is added, quoted by Patanjali, which takes up the 6th step of the Maitreya Upanishad, with the addition of the 5 yama and the 5 niyama. Raja Yoga as a mental discipline states that the mind is a great pointer. Just as the rays of the sun concentrated through a prism can cut the steel, the free rays of the mind, when they are concentrated in dharana, in one point, develop great power, which allows one to have access to intuition, to the most deep knowledge. So, Kante said the yoga thought like the tradition is a living science. However, remember that yoga is everything, but not everything is yoga. Namaskar. Gayatri Devi, thank you so much. It's so kind to be present. Now I give the floor to André Riel, that is our representative from France. I remember you that all our people is from European Yoga Federation, and all these people is representatives to United Consciousness too. So André, please open your microphone and give us your speech. Thank you so much. Good morning, everyone, and good evening wherever you are in India or in other part of the world. We have been given this time as the European Yoga Federation to give a few glimpses of not our activity, but who we are. And I've been given several lectures for the past 2 years now because of those lockdowns.
And I noticed that most of the time, all that we say doesn't have much importance, doesn't bring a big difference in people's life, and less, or feeling less alone, as this lockdown has brought a lot of loneliness. And I've been thinking a lot about what we call yoga. Since about 50 years, all over the world, including India, yoga has become an exercise. This is very new. It's never been an exercise. We cannot say that yoga is a practice. If we take the word for what it means, unity. So unity cannot be a practice. Unity is just reality. And we could say that yoga is a way to be and is a way to live, and is not practicing on a piece of carpet. This is very narrow, and the word itself means unity. That means no fragmentation. And we rarely ask, where is the fragmentation is coming from? Where is it? Why do we live a fragmented life? Why don't we live a united life? Why don't we live in what the word yoga means? Why are we so in little pieces? When we look at it, it comes from the mind. The mind is fragmented. And it has been a big, big question. Why is the human mind so fragmented? It seems to come from a very narrow understanding and very short-minded education. Why do we educate our children to be fragmented? Why do we do that? Why do we bring troubles? Why is our mind bringing conflicts? When we inquire into this, at first, for doing this inquiry, we require a very strong motivation for truth, a kind of truth without any duality, without fragmentation. That is the perception of me and the others. In this world, everyone who considers that there are others have to understand that that very person is the other of 7 billion people. Is there an individual consciousness? Nothing has ever shown that this exists. Never. Different people have different ideas, but the process of thinking is the same. Different people have different colors of the skin and eyes and the whole body, but the brain and the body are the same in everyone. And this is a result of million years of nature. So how is it that we don't inquire into this reality? When inquiring into this reality and to the habit of fragmentation, quite often we kind of discover a very wide perception. And into this wide perception, there is the feeling of sacredness. The sacredness of life itself. We are the sacred life. This is what we are. And
From there, and from only there, an action that cannot bring fragmentation is possible. Every action that comes from the thought or the mind brings trouble and division. So I understand, Babaji, when you're talking about being karma yogis. It is a kind of action that comes from a natural expression of unity. Action cannot be the first movement, it is the very last one. And that's mind. And it's so important that we realize that mind matters. The moment COVID stuck, we all were under the lockdown. Started getting calls after some days. Initially, it was like a fun trip for everyone. After 10 days, 11 days, calls started pulling in. People were stressed. They had best of the luxuries in the house. ACs hai, TV hai, you have best of everything in the house. Yet I would see people would walk out to the main gates to see I had no clue what. All the luxuries, the family, people whom you love the most, wo kuch bhi aapko was not giving you that satisfaction. What was it? What did COVID actually bring to light? It got us. It's not an important subject even of discussion, right? That is why it is so important that we take such platforms and we actually put it across. So can anyone tell me who's that one person with whom you spend the maximum amount of time? With ourselves. Yourself. With ourselves. Yeah, true. With ourselves. And have you ever taken some time out, sat down alone and thought of the way that we talk to ourselves? Right? And what is the self-talk? I'm grateful there have been authors who have actually propagated the idea of self-love, compassion, empathy. Yet, what is the kind of self-talk that we do to ourselves? What are the kind of things that we say to ourselves? Anybody? I'm too thin, I'm too fat, I'm dark, I'll get tanned, I cannot speak this, I cannot do this. Oh, I wish I could have been up 15 minutes early today. Oh, I missed my practices. Is it possible for any of you to even go back to a time when you actually were appreciating of the fact of you doing something? दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप खुद को appreciate कर रहे हो? Is it possible? कोई करता है ऐसा अभी यहाँ पे? Anyone? Oh, I'm glad there are few who are doing it. I'm really glad there are few who are doing it. And it is so important. इसी पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसी पर्सन को सबसे ज़्यादा बीट भी करते हैं, right? We never appreciate. There are many exercises, there are many people talking about the mirror work and this and a lot of things, right? But then what is all this giving us? The first is the conversation that you're having with yourself. And secondly, listening. How do we listen to ourselves? Can anyone tell me, do we really listen? Do we really listen? We do? Awesome. And how do we listen? Can you please tell me, how do we listen? What you are saying, I'm just listening to what, so that I can just get immersed in what you are trying to explain. Awesome. So there are ways that we listen to a person, right? The first and foremost, and which is very, very common, and I guess हमने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, we listen to answer back.
So when a person is talking to you, you already have started framing what you are going to say next. Have you ever noticed that? This is how we listen. First, we listen to answer back. We listen with all our next statements prepared. So technically, we're not listening. We listen, secondly, with a perceived notion in our head about the other person. So suppose, for example, आपकी कोई friend आपके पास आती है and she says something. You already have a perceived notion in your head about that person. And you will listen from that perception. Right? ये ऐसा ही बोलेगा, ये यही करने वाला है. I knew this will happen. I knew I was getting it, it is coming from you. We technically are still not listening. And then, cherry to the cake is the judgment. A person comes and shares his problem with you, right? What do? Do we listen? We start the stages, preparing for the answer. अच्छा इसको ये problem है, अच्छा ये भी तो कर सकती है, अच्छा ये भी तो हो सकता है. वो पूरे bargain में we forget that the other person is actually sharing or pouring his heart out. Right? It's so important for us to just touch upon these two aspects from today on, and you see a whole new world in your family, in your relations, in your workplace, your relations with your professors, your colleagues, your parents. Everything will change. The moment a mother comes close to the child knows, okay, she is going to ask me to sit down for my practice, get up, switch off the TV, don't use the mobile, blah, blah, blah. Technically, at times she just comes there to give you a hug or probably just check on you. But then we have actually designed ourselves in that way, so that this is how our listening goes. And it impacts all the structures of our life. I really want you all to take some time out today. थोड़ा सा time आज अपने साथ बैठिए. Just start listening to people. The way they are saying it. The moment I say it is sunny today, I have said it is sunny today. I never said I need an AC. Right? अभी अगर मैं हिमांशु जी से कह दूंगी कि आज गर्मी बहुत है, the first statement he will give me would be probably, I'm not sure, probably it would be, oh, you need the AC? Yes, All I said was, it's hot today. Just listen to the way the person is saying, probably he does not even need your help. With mental health issues, this has been the major bargain. Listening is an art, and the moment you just listen, half of the problem of the other person, you have solved it. And not even them, me, you, everybody present here. All we need is to be heard. I'm standing here talking to you all. I want you to hear me out. You talking to your friend or calling somebody, you want to be heard. As a child, as a teenager, adults, anybody. Old age people, they want to be heard. That is all they want. And that is the care and concern that you technically give to each other. So I guess my talk has been a little bit of information, and I'm really sure that we start practicing two things: how and what we talk to ourselves, and how are we listening. And the most important thing, keep asking yourself this: are we listening? Thank you so much, everybody. It was a wonderful time here. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for this nice session. Thank you so much. Indeed, listening is an art, and we should follow it from today itself. अक्सर लोग होते हैं कि बोलते जाते हैं, सुनते नहीं किसी का. But we'll practice it from today, ma'am. Our next speaker is on online mode. Yogacharya Dr. Ananda Balayogi Bhavnani
Director, Center for Yoga Therapy Education and Research, Director at Sri Balaji Vidyapeeth, University, Pondicherry, Chairman of the International Center for Yoga Education and Research at Ananda Ashram, Pondicherry, India, and Yoganjali Natyalayam, the premier institute of yoga and Carnatic music and Bharatnatyam in Pondicherry. He is son and successor of internationally acclaimed yoga team of Yoga Maharshi Dr. Swami Gitanand Giri Guru Maharaj and Yogacharani Kalaima Mami Ammaji. Srimati Meenakshi Devi Bhavnani. He is gold medalist in medical studies MBBS with postgraduate diplomas in both family health as well as yoga. It's my pleasure to invite you virtually on board. I welcome you, sir, to address our audience online and offline mode virtually. Thank you. Ananda Ashram at ICY Pondicherry and the Center for Yoga Therapy Education Research of Sri Balaji Vidyapeeth University. I am very, very happy to be with all of you today. I have just come back from performing the Guru Puja for my illustrious Siddha Guru, Srila Sri Shankaragiri Swamigal. Today is his 27th anniversary of Mahasamadhi. And he had brought my father and Guru, Swami Gitananda Giri, to Sri Kamli Swami Madam, and I'm continuing the tradition. I have been listening with great interest to all the speakers, and especially would like to appreciate the words from Yogacharya Andrew. You have brought out the key aspect of yoga, which is to be a good human being. It is not what we do on the carpet. It is not what we do on the mat. It is what we are as a human being that defines yoga. Because yoga is to be lived 24 hours. It is not something you say, oh, I did 45 minutes of yoga today, so 23 hours and 15 minutes I can do Goga. It is not like that. That yoga has to be 24 hours sadhana. It has to be a nitya sadhana, not an anitya sadhana. It has to be eternal. It has to be based on Dhrida Bhumi, as Maharishi Patanjali tells us, that abhyasa, that sadhana we do, satu dirghakala nairantarya satkara ase vito Dhrida Bhumi. That is what sadhana is. That is what abhyasa is. And such an abhyasa, a yoga abhyasa, is what is needed today. Because we have started doing yoga, but yoga is a state of being. It is not something you do. So we think, oh, I'm doing yoga, so I'm a yogi. Doing yoga doesn't make you a yogi. Becoming yoga makes you a yogi. You have to come into that state of being, which is called yoga, which is an integrated state of being, where what you think, you say, and what you say, you do. You become a wholesome, integrated human being. And this is why, despite the modern popularity of yoga, and we are all celebrating International Day of Yoga for the 8th year now, I must play the devil's advocate here and say yoga is not really for the masses. Yoga is for the individual's journey from the self to the highest self. Uddhave atma atmanam natmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhu atmaiva ripu atmanaha, says Bhagavan Yogeshwar Sri Krishna in the Bhagavad Gita. It is about self-empowerment. It is about understanding the self through Swadhyaya. It is by having Atma Vichara, so that you understand yourself. In understanding yourself, you understand others, you understand life, and you start to realize the answer to the question, Koham, Koham, Koham. And you realize the answer is Soham, Soham, Soham. We start to realize the same divinity that is in us is in every living being. We start to have love and compassion towards each and every being, because we realize we are all one. Ekam. We are not in Dvitiyam or duality. Because the moment you think of Dvitiyam and duality,
you will be brought into survival instinct, abhinivesha klesha, and all your sympathetic hormones will come in, adrenaline, stress hormones, cortisol, and you will come into vyadhi, adi leading to vyadhi. That is why it is important to move from duality, from dvitiyam, move back to ekam. That state of ekam is where we are all one. And this is why what is missing in modern times is Guru Shishya Parampara. We have started to make a mechanized, robotic, machine model of yoga, where we think that we can teach 1,000 people at one time, and through online we can teach 100,000 people at one time. Guru Shishya Parampara is a relationship between the Guru and the Shishya. And the Guru who understands what is the potential of that Shishya, what is the innate divinity of that Shishya, what is the Purna Swarupa of the Shishya, and enables that Shishya to manifest that Purna Swarupa of that Daivika Atma nature, where we realize our divinity. But today we think it can all be done in a 1-month teacher training course. We think 200 hours yoga teacher training. 200 hours is not even the beginner. You need 20 years of everyday yoga sadhana to start to understand what yoga is. Then you start to practice it. Then you start to live it. Then you start to share it. And today, within a weekend, we want a 200-hour certificate and we want to become a yoga teacher. We must remember the living tradition of yoga. It is not a dead tradition. It is zinda hai. Yoga zinda hai. It is like tiger zinda hai. Yoga zinda hai. It is a living tradition. It is important that we remember it is a living tradition. And that living tradition has to be kept alive by creating the proper atmosphere, which is the Guru Shishya Parampara in the Gurukula setting. Because that is the only way the actual spirituality of yoga can be shared. And that is where the spirituality of yoga is the highest aspect. Adhyatma yoga is where we need to move, where we are working towards the Adi Atma, not just the body. We are not just the Annamaya Kosha, we are not just the Pranamaya, we are not just the Manomaya, we are not just the Vijnana, we are not just the Anandamaya. We are all of that and something more. And that is why we need to go back to the Vedic teachings, which are telling us so strongly, Om Tattvamasi, Ayam Aham Brahmam, Aham Brahmasmi, Prajnanam Brahmam. And we have to realize that yoga is not just for curing some disease. Yoga is not just so that you can have a profession and make some money. Yoga is a tool of evolution, self-evolution, so that you can go back to the source. Sometimes we say it is not evolution, it is involution. Because you have to go back. Prati Prasava has to be there to go towards Kaivalya. We have come away from Kaivalya. That is, we have come away from the causal. That is the Karana Sharira. We have come to the Sukshma Sharira and we have come to the Sthula Sharira. We need to go back. Sthula to Sukshma to Karana. Retracing our path is called Prati Prasava. Prasava means to give birth. And that is manifestation. We have to go against it. And going against it is not easy. Again, Maharishi Patanjali tells us, Parinama Thapa. It is very, very difficult. Because that Parinama, that transformation is always going to be difficult because everybody is going the other way. Everybody wants to have 100,000 people in class. And you are saying, Dr. Ananda, if you only have 1 or 2 in class, you are happy. Yes, Dr. Ananda is happy with 1 or 2 good students who really want to become yogis. I am not interested with 100,000 who want to get a certificate to go out and do a circus. That is not yoga. And this is why, despite the popularity, we have to understand the popularity is only like popcorn. We have to go to the real slow yoga, not the fast yoga. Slow yoga is healthy. Slow food is healthy. Slow thinking is healthy. Slow evolutionary growth is healthy. If there is rapid growth, it is cancerous. As a doctor, I'll tell you that if in your body one cell is growing very fast, it is cancer. So normal growth, natural growth is slow and steady.
And that parinama tapa we have to overcome as we retrace our way back. Pratiprasava and all the gunas, they recede back. Pratiprasava and the gunanam. Pratiprasava kaivalyam. We have to go back. So I would like to stress the importance at this time. A living Guru Shishya Parampara is essential for the real yoga to be understood by humanity. Real yoga is a gift to humanity. But today we have gone from golden platinum yoga to plasticized yoga, mechanical yoga, which is only based on Instagram posting. That is not the yoga. That is as good or as bad as physical exercise and gymnastics. When does it become yoga? When there is transformation. When there is transformation in the individual, it becomes yoga. And ultimately, in yoga, there will be transcendence. The lower is transcended into the higher, and the higher is transcended for the supreme. This is the path of yoga. Transformation and transcendence is what yoga is about. Along the way, your diabetes will get controlled. Along the way, your hypertension will get controlled. Along the way, other good things can happen. But also as you grow, many people may fall out of your life because you will start to be very different than them. Because again, Yogeshwar Sri Krishna in the Bhagavad Gita tells us, the yogic perspective is different than the common person. And that is why he says, what the common person is thinking is day, the yogi knows is night. What the common person is thinking is night, the yogi knows is day. The perspective can be very, very different. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato muni. That muni we have to become. One who can understand the higher perspective through yoga, which is transformation and transcendence. So at this time, I would like to make a request to each and every one of you, an appeal from my heart, that please remember yoga is a living tradition. And that living tradition is based on the roots of yoga and the seed of yoga. And the root and the seed of the yoga is based in the Gurukula, where the Guru and the Shishya understand each other completely. Let us strengthen the Guru Shishya Parampara. Let us strengthen the Gurukula model. And let us strengthen the true yoga so that we are not caught up with plasticized, fast yoga, but the platinum level, slow yoga that will ultimately enable us to realize Aham Brahmasmi. Thank you so much for this wonderful opportunity to be with all of you. I thank my dear Himanshu ji, all the eminent guests who are part of this celebration, all the audience who are there. May we all grow and glow in yoga. After listening Garima's talk, and she has given a wonderful explanation about yoga, like what is yoga. So kahin na kahin mind mein ye chal raha hoga ki let's start yoga from today itself, right? So let's have a gist of yoga, ki what is yoga in next 5 to 10 minutes, what we can do, how we can begin. Okay, so let's stand on your place for a while and let's do a few stretches here. So that because आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं on and off, if you would like to. Wonderful. And let's raise your both hands up and stretch the whole body in the upper direction. Maybe if you're comfortable, if there is no disorder with you, you can raise your heels also. Feel the tension in your heels. Feel the tension in your calf muscles. Feel the stretch in your spine fully. Stretch, stretch, stretch. Keep breathing in, breathing out. Do not hold your breath. Keep breathing, and slowly bring the hands back and relax. Wonderful. And now, let's stretch. Raise your both hands to the sidewards. Stretch the whole body one more time. Stretch, stretch. Are you all with me? Let's stretch. And then raise to the other side. Stretch, 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 stretch. And slowly come back and relax. Now you can have a seat. Maybe a gentle stretches always helps to give the good blood circulation to the body, and this will also help you somewhere right now. All right, now we'll move towards the one calming practice. Meanwhile,
the technical issues get resolved and we'll have a calming practice. So I would request once again, as Yogacharya Dakaji mentioned in the morning, that we have to sit upright, spine, backbone straight. So sit comfortable. Your both feet should be on the ground, firmly fixed. Ensure your hands are resting well on your thighs or maybe on the side rest chair. Keep the bag aside. Make yourself comfortable. Be in this room. Let go each and everything outside of this room right now. All right. You can remove your mask now. Everyone is here, so be comfortable completely. All right. So keep your both feet together and firmly fixed on the mat, on the ground, and keep your spine upright. All right. Now just focus at one point, what you can see on the stage, on the screen, wherever. Just focus. Nothing to do, nowhere to go. Just be here. And if you feel in some time your eye starts blinking, let them close, let them be. Just focus. Keep the specs aside if you wear your specs, so you can remove your specs and keep them aside. And just focus. And whenever you feel your eye starts blinking, or you feel you want to close your eyes, just gently keep your upper eyelid a little heavier and place it on your lower eyelid. And if you don't want to close your eyes, just look wherever you are. Relax all the facial features, your forehead, your eyebrows. Let your eyebrows get relaxed completely. Let your inner corners of your eyes get relaxed. Let your ears get relaxed. Let your nose get relaxed. Your lips, upper lips and lower lips, and your jawline get relaxed. Now take the attention entirely on your nostril region. And watching your inhales and exhales, feel the breath of your own. How much you are able to experience your own breath. Do not feel the drowsiness, do not get asleep. Try to remain awake, alert and aware. Experience the touch of the spine against the chair. Experience the touch of the floor against your feet. Just ensure you are here sitting in this auditorium comfortably. You are here in this moment. And what you are doing? You're just watching your breath with the closed eyes. Now we'll chant Om. So take the attention at the mid-pro region with the closed eyes. Do not put much effort while gazing at the center region. And try to visualize the symbol of Om. It could be of any color, it could be of any size, it could be of any shape. Just visualize. Whatever form you can visualize the symbol of Om. Now Om has 3 letters, A, U and M. And we will chant all 3 letters separately 3 times. So in Hindi, Om has pronounced A, U, Ma. So we'll chant 3 times Akar, 3 times Ukar, and 3 times Makar. While chanting the Om, just remain aware
that it's get initiated from your heart and it's getting dissolved into your heart. So let's inhale with me and let's chant Inhale. Inhale. Ensure you are exhaling as per your capacity. Do not go beyond your capacity. And let's chant Oka. Inhale. 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 Now last 3 rounds of Maka. Inhale. 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 Now again take the attention at the mid-pro region and we'll chant 3 Omkars. Let's fill this room with the vibrations of Om, the universal power, the symbol for Ishvara. Inhale. 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 Let's experience the silence of your mind and the stillness of your body for a few breaths. Just be with yourself, be with your body. We'll end this session with 3 Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Bhyo Namaha. Gently rub your palms. Create some good heat, good energy.
while giving that warmth to your eyes, while cupping them and sending those vibrations, sliding your hands to your body, to your face, to your neck. Thank you so much. This was all about from my side. Hope you get refreshed, get energized. Thank you, ma'am, for the awesome session. This was session in the physical form, and ma'am was there with us from initiation till execution. So thank you so much. She was present here yesterday also. Whole day she invested her day, and today also. So I'm really thankful to you from whole our team. And right now, before initiating our session next and calling upon stage next speaker, I would like to do an announcement regarding certificate distribution and memento distribution. So for this, I would like to call upon stage Mr. Himanshu Pandey ji, Professor Rajiv Chopra ji, Principal, Delhi College of Arts and Commerce, without whom this would not have been possible. आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। And Mr. Mukesh Shukla ji to please be on the stage for the distribution of mementos and certificates. Now I would like to call upon stage one by one all our special guests and dignitaries who all have honored us by their speech and by coming up here to get the memento. So first of all, I would like to request Principal Sir Professor Rajiv Chopra ji to distribute the mementos, starting from Shri Dhakaram Sapkote ji. He came all the way from Jaipur, having his Ekam Yoga Center, teaching and curing all the people from India and abroad. We are honored to have you here, sir. Thank you so much for your kind presence. The next speaker, Mr. Mukesh Shukla ji. Now I would like to call upon stage Mr. Joshi ji. Mr. Joshi ji, Arun Joshi ji. Now, I would like to ask Mr. Himanshu Pandey to distribute the memento to Mr. Madan Manav ji. Now I would again like to request Professor Rajiv Chopra ji to present the memento to Ms. Roli Singh. Thank you, ma'am, for your kind presence and your speech. Now I would like to call upon stage Ms. Deepti Jain. And would request Mr. Mukesh Shukla ji to please present her the memento for the beautiful session and for helping us out in every endeavors today. Now I would like to request Ms. Garima Bhandari ji to be on the stage and receive the memento from Mr. Himanshu Pandey.
Now I would like to call upon stage Mr. Sachin Ji from Patanjali and would request Mr. Rajiv Chopra Ji to present the memento. If I'm not missing out anyone's name, now I would like Mr. Rajiv Chopra Ji to present the memento to Mr. Mukesh Shukla Ji for coming over here and helping us out in finding this college. Thank you so much, sir. Now a biggest and greatest thank you message to Mr. Professor Rajiv Chopra Ji, the one and only who allowed us all the way from Uttar Pradesh to come up here and integrate this session globally. Thank you so much, sir. आपके बिना ये संभव नहीं था. I would also like to call upon stage our very next guest, Mr. Rohit Ji from Art of Living, to please come up on the stage. And I would request Professor Rajiv Chopra Ji to present the memento. Now one by one, I'll take the name of the offline mode people who have attended this session, whether it's students or teachers or dignitaries or anyone. One by one, I'll take the name and I would request the 3 dignitaries standing over here to give away the certificates to the people. Miss Vandana from NSS. I'll take out the name one by one so that you can be standing here in the queue. Miss Anubhav, Mr. Anubhav from NSS. Mr. Anubhav Shival. It's 2 Anubhav together. Mr. Sahil. Mr. Dharya. It's a beautiful name, Dharya. Miss Shivangi. Mr. Shiv Kumar. आप सभी के समर्थन से ये प्रोग्राम चल रहा है अपने आखिरी चरणों में. लगभग कुछ स्पीकर्स और बचे हैं. आपके धैर्य और आपके यहाँ प्रेजेंस की वजह से ये संभव हो पाया. मिस्टर सौरभ, मिस अवंतिका, मिस्टर लक्ष्य, Miss Garima, yeah, clap for yourselves. Mr. Aryan, Mr. Shivam, Mr. Jay. Miss Vasudha,
Mr. Bhagat Singh, Mr. Vansh, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो प्रोग्राम कुछ और बाकी है। तो जितने भी हमारे कल के पार्टिसिपेंट्स थे, इफ यू कैन आस्क देम टू कम एंड कलेक्ट देयर सर्टिफिकेट्स, वी आर हैविंग देयर सर्टिफिकेट्स। I request all the faculties, if someone is here, all the faculties of DC college, can you come please on stage so that we can present the memento as well, you as well. Also, if any of the students are left and they are here in the auditorium, request them to come. I request for the special contribution, I request National Institute of Event Management New Delhi students to can please come on the stage for the certificate distribution. Thank you. I would request Mr. K.L. Dhingra जी, जिन्होंने बहुत मदद करी, हर जगह वो खड़े रहे, to please come up on the stage to receive the memento. Mr. K.L. Dhingra जी. Now I would like to request our team members from National Institute of Events Management, Mr. Jasmeet, to receive the certificate, Miss Sukanya, Miss Muskan, Miss Anjali, Miss Fareen, Miss Prachi, to please come up on the stage and receive their certificates. Without your all support, it would not have been possible. Mr. Rohit. Now I would like to call upon stage Mr. Amit ji for receiving the certificate and helping us out in all the technical problems that we faced. I'll request all faculty members to come to the stage one by one. Thank you. I request everyone to please come. एक बार में आके एक ग्रुप फोटोग्राफ्स भी यहाँ हो जाएंगी और हम सर्टिफिकेट्स भी दे देंगे, तो एक साथ आप आ जाओ.
I would like to request Mrs. Neha Agrawal. Your husband is waiting outside. Please meet him. Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Yes, sir. Please keep on clapping for your all faculty members. तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि कौन कितना ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स को. तो कीप ऑन क्लैपिंग, वरना बाद में बदला लेंगे. Keep on clapping, keep on clapping. Let's clap. Yes, keep on clapping for your teachers, for your professors. And we are really thankful to Delhi College of Arts and Commerce for giving us an opportunity to present International Yoga E-Conclave. Now I would thank you all the faculty members for listening to us and all the special guests. Now, please don't go away. Abhi program baki hai. All the physical mode speakers are sitting over here and we'll be enjoying the session. Physical session, virtual sessions are still ongoing activity. And now I would like to call upon stage Mr. Mukesh Shukla ji to please address the audience. He is a very special guest who allowed us to meet Principal Sir, and we got this college as a place to present our International Yoga E-Conclave. So we are very thankful to Mr. Mukesh Shukla ji. We are still having our sessions left. तो सर्टिफिकेट मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉल छोड़ के जाएंगे. आपको यहीं बने रहना है. सर्टिफिकेट इसलिए जल्दी दिया गया है जिससे आप लास्ट तक हमारे साथ रहें. तो ये सफर जो 2 दिन का था इंटरनेशनल योगा ई-कॉन्क्लेव, दिस ऑल इवेंट इज लाइव इंटरनेशनally and globally. So request you, since you are representing your college, so I request faculty members, I will request the staff, I will request the students to kindly be seated till the time this session gets ended. Half an hour more will be there. Thank you. With this, I will request Mukesh Shukla ji to come and give the speech. Thank you. मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ. हमारे सामने राजीव चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, प्रिंसिपल रहे, हम सबके मार्गदर्शक रहे, और इस पूरे कार्यक्रम में मंच पे बैठे हुए आप सब लोग और पूरे देश और दुनिया के वो लोग जो इस कार्यक्रम में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े रहे. आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है. जब योगा के बारे में बात करने के लिए कभी मौका मिले और जब मैं आपकी चेकलिस्ट देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो सब लोग जिन्होंने वर्षों तक योगा के ऊपर काम किया उसके बारे में बात कर रहे थे. हम सब उस परंपरा
उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने योग को जन्म दिया, योग को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया ने इस योग को माना है। हमारे इस लिस्ट में पतंजलि के लोग जो बैठे थे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि मुझे याद आता है कि एक बहुत लंबे वर्षों की दास्ता का काल जो हमारे साथ हमारे बीच में गुजरा, उसने हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी बहुत सारी क्षमताओं को समाप्त करने का काम किया। और उसका ये परिणाम हुआ कि कई हमारी चीज़ें, नीम का पेटेंट अगर अमेरिका में होने लगे तो मुझे समझ में आता है कि हमारी कई चीज़ों को कुछ लोग विदेशी ले गए और जो नहीं ले जा पाए उसको समाप्त कर दिया। ऐसे समय में कुछ संगठनों ने, कुछ संस्थाओं ने तय किया, और मुझे याद है कि 100 वर्ष पहले से वो अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यक्रम में उन्होंने योग को अपने शामिल किया और उसको जिंदा रखने का काम किया। लेकिन जिस तरह से पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, इस प्रकार की संस्थाओं ने इसको पिछले 20 साल 30 साल में पूरे विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया, और 8 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह करने का काम किया वो अपने आप में अद्भुत था। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता थी पूरी दुनिया को। मैं जब योग के बारे में बात कर रहा था, मुझसे अधिक काम करे हुए योग के क्षेत्र में काम किए हुए लोगों ने बात करी, लेकिन मैं जब योग को कैसे देखता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि योग का अर्थ है मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर का एकीकरण करना। उसके बिना योग का अर्थ पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैंने किसी से पूछा कि योग में हम आसन करते हैं, तो उन्होंने मुझे जो बात कही वो बहुत मुझे सटीक लगी, मैं आपके बीच में दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि आसन करते हैं हम, अगर शरीर को किसी भी प्रकार से बैंड कर सकते हैं, ये काम तो सर्कस में भी हो जाता, लेकिन जब तक मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर इन सब का एकीकरण होकर एक साथ एक स्थिति में अगर वो काम नहीं हो रहा है तो वो योग नहीं बनता। योग सिर्फ शारीरिक स्वस्थता का प्रतीक नहीं है। योग शरीर, मन, बुद्धि, और उसके बाद ये जब उसको ठीक कर देता है तो उसके बाद समाज, फिर राष्ट्र, और उस राष्ट्र के कारण, उस राष्ट्र में प्रभावशाली तत्वों के कारण पूरे विश्व में शांति देने का काम भी कोई कर सकता है। तो योग के अंदर वो सामर्थ्य है, ये करके भी दिखाया है। हम सबकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि हम उस संस्कृति के वाहक हैं। ये योग हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही ऋषि मुनियों ने, तत्कालीन वैज्ञानिकों ने और उनकी हजारों हजार वर्षों की तपस्या से खड़ा हुआ। इसलिए हमारी और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस स्तर पर हैं और जितना समय हमारे पास है, उसके आधार पर सिर्फ इसको जीवित रखने का काम नहीं करें, इसको बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। हम अलग अलग प्रोफेशन में हो सकते हैं। आज से 20 साल 30 साल, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ बार बार रामदेव जी का, पतंजलि का, या इन सब संस्थाओं का इसलिए बार बार धन्यवाद देता हूँ कि 20 साल 30 साल पहले एक मानसिकता थी कि ये शायद जो लोग हिमालय की केंद्राओं में रहते हैं उनके लिए होगा, या उनके लिए होगा जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए होगा। लेकिन आप लोगों ने, समाज के सब लोगों ने अपने सामर्थ्य से ये स्थापित किया कि ये जन जन का काम है। ये एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हो सकता है कि जब हम किसी विशेष प्रकार के व्यायाम की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो हो सकता है वो किसी के सामर्थ्य का हो या किसी के सामर्थ्य का ना हो, लेकिन एक ऐसा व्यायाम है, एक ऐसी शरीर को पुष्ट करने वाला एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा तरीका है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक 120 साल के बुजुर्ग के लिए भी संभव है। ये ऐसा एकमात्र शारीरिक मानसिक व्यायाम है जो सबके लिए संभव है। इस सब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमको इसके प्रति, और जो चूंकि हमारी संस्कृति ने हमको ये दिया है, तो हमारी और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इसको बढ़ाकर आगे ले जाएं। आज पूरी दुनिया ने इसके महत्व को माना है, उसके कारण भारत के प्रधानमंत्री का भी उसमें बहुत बड़ा साधुवाद है, और ये साधुवाद इस देश के 125 करोड़ लोगों की सहभागिता के कारण संभव हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे विषय पर एक कार्यक्रम किया, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं DCSE कॉलेज का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके बीच में आने का। धन्यवाद। Thank you, sir, for your speech and for all your kind support and help that you have given. We are honored to have you here. Thank you so much. Now our next speaker is Yogi Sachin Kumar ji. He is International Yoga Teacher and Evaluator, certified by YCB, Ministry of Ayush, Government of India. He is serving in Patanjali as a yoga instructor for a long time. He gives yoga consultation to different types of patients. He has done more than 100 webinars during COVID-19.
He is member of Indian Yoga Association. He is member Yoga Therapist Association and other organizations. He does time to time awareness programs to save the environment. He manages plantation and distribution of environment friendly plants like giloy, neem, aloe vera and many other plants at different places. Time to time he does yoga camps for youth in many schools and colleges and institutes. I would like to invite you on the stage, sir, for your speech and addressing the audience. आइए ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। इंटरनेशनल योगा ई-कॉन्क्लेव के हमारे ऑर्गेनाइज़र, हमारे मंचासीन सभी योग गुरु, स्पीकर्स और हमारे कॉलेज प्रबंधक के लोग और जो भी ऑडियंस यहाँ पर हैं या जो भी सुन पा रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप लोग इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। काफ़ी बातें आप लोगों ने योग के बारे में सुनी हैं, समझी हैं, जो योग से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है और आगे जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना साझा करना चाहूँगा आपसे प्रैक्टिकली। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोविड करीब 2 साल से ऊपर आज हो गए हैं और किस तरीके से ये विदेशों से हमारे यहाँ पर आया और कितनी बड़ी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी ये देश ही नहीं दुनिया के लिए हुआ, जिसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इसमें हमारे योग ने और हम लोगों ने कैसे काम किया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब कोविड हमारे यहाँ इंडिया में आ रहा था, बढ़ रहा था, उससे पहले बहुत तेज़ी से विदेशों में ये फैल चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे इसको जीत पाएंगे, कैसे इसको ट्रीट कर पाएंगे। जो हालत बाद में इंडिया में हुई वो पहले वहाँ पर हो चुकी थी। हम लोगों ने उस टाइम पर इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो देखने में आया कि ये कहाँ से एंटर करता है, कैसे हमारी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट होता है और फिर आगे ये कैसे बढ़ता है। तो देखने में ये आया कि ये हमारी नोज़ से एंटर करता है, उसके बाद हमारे गले में जाता है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और उसके बाद ये स्प्रेड कर जाता है और फिर आपको पता है कि क्या हुआ है। तो हमने उसके ऊपर जब काम करना शुरू किया, बाहर की सब रिसर्च भी देखी, कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अपना काम हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा PRI है रिसर्च सेंटर, वहाँ पे हमारे 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हम इसको कैसे इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में इसके ऊपर जब काम किया तो हमने देखा कि नोज़ पे हम इसको कैसे एंटर होने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑयलिंग का ट्रीटमेंट देखा, वो काफ़ी कारगर हुआ और सबसे ज़्यादा कारगर इसमें हमारा अणु तेल हुआ, जिससे कि हमने इसको एंट्री लेवल पर रोक दिया। जब ये एंट्री लेवल पर नहीं रुक पाया, ये आगे चला गया, गले में गया, तो फिर उसके लिए हमने गार्गिल में थोड़े से एड ऑन्स किए, जैसे हम सेंधा नमक का गार्गिल करते हैं, हमने इसमें एड ऑन किया कि हम इसके अंदर हल्दी का उपयोग करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा और 2-3 चीज़ें डालेंगे और उसके साथ ये बहुत ही इफेक्टिव हुआ, जिनको कि गले तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हुआ। उसके लिए हमने काम किया कि हम कैसे उसके ऊपर इसको जीत सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम्स लिया, उसमें कई चीज़ें हमने डाली वाटर के अंदर स्टीम लेके, और बहुत ही इफेक्टिव ये काम किया। और हमने इसके ऊपर जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले इवन मेरा ही योग कैंप हुआ था स्पेशली ऑन कोविड, और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और इंडिया में उससे पहले कोई हो भी नहीं पाया था और उसके बाद हो भी नहीं पाया। तो उस टाइम पे हमने कुछ काढ़े वगैरह इन्वेंट किए जब बिल्कुल ब्लैंक था, एकदम डार्क था, किसी को कुछ नहीं पता था कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं है, नथिंग। तो हमने उसमें कई चीज़ें जैसे गिलोय है, नीम है, अश्वगंधा है,
और कई सारी चीज़ें हैं, वो हमने पेशेंट्स को देना शुरू किया। और 5 से 6 दिन में, जब कोई मेडिसिन भी नहीं थी, कुछ नहीं पता था, 5 से 6 दिन में जितने भी पेशेंट्स थे सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, सबकी रिपोर्ट्स। उसके बाद फिर हमारे जो साइंटिस्ट काम इसके ऊपर कर रहे थे उन्होंने कोरोनिल दी। आप सभी को पता है कि उस पर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको बाद में रिकॉग्नाइज किया और उसके माध्यम से हमने जितने भी पेशेंट टाइमली आ गए उनको सबको हमने क्योर किया। तो अभी कोविड जो है वो गया नहीं है, हम इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया में तो ये 4th लहर जो है वो दिखा रही है धीरे धीरे अपना, लेकिन बाहर ये सब हो चुका है। 5वीं 6ठी लहर भी बहुत से कंट्रीज में आ चुकी है और बहुत ही तबाही कर चुकी है। तो हमें बहुत ही केयरफुली रहने की आवश्यकता है इससे। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें ही आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, समय की थोड़ा सा लिमिट है। तो आप जब भी घर से निकलें, ये बिल्कुल 100% टेस्टेड है, अणु तेल डालकर निकलें। 4 से 5 घंटे ये आपको ऐसी लेयर बना देगा कि कोई भी वायरस, नॉट ओनली कोविड, वो एंटर नहीं करेगा। ये आपका सेफ गार्ड का काम करेगा। इसको आप लगा के चलिए। छोटी सी शीशी होती है, इसको आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में। और 4 से 5 घंटे के बाद अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप फर्स्ट स्टेज पे जो इसका एंट्री पॉइंट है वहीं पर इसको रोक देंगे। दूसरा, गार्गिल हल्दी के साथ सेंधा नमक का मॉर्निंग और इवनिंग आप डेली करिए। अगर गलती से पता नहीं चलता क्योंकि इसका 2-3 दिन में, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर जाता है और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और इसके साथ हमने अभी एक चीज को और जोड़ा है जिसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आ रहे हैं। नॉट ओनली कोविड, इन एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी डिजीज, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हवन सामग्री इन अ साइंटिफिक वे इज देयर इन द मार्केट। हमारी संस्था की भी आ रही है और भी बहुत से लोग बना रहे हैं। तो आप यज्ञ को भी इसमें जोड़िए, आप करके देखिए, क्योंकि हमने पेशेंट्स के ऊपर उसको इस्तेमाल किया है। अगर आप प्रॉपर यज्ञ नहीं कर सकते, एक देसी गाय का उपला लीजिए, उसके ऊपर हवन सामग्री को डाल दीजिए, सुबह शाम उसकी जस्ट पूरे घर में धुनी दे दीजिए और जो बाद में वो बचता है उसको पेशेंट के पास में आप रख दीजिए। आप देखिए जो पेशेंट 10 दिन में रिकवर होता है वो 5 दिन से कम में रिकवर होने लगेगा। ये हमने टेस्ट किया है, आप उसको करके देखें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, योग की और बाकी चीज़ों की तो पहले से चल रही थी। अभी हम ऑनलाइन यज्ञ की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी हमारे पेशेंट्स रिकवर हो सकें और हमारा भारत जो है वो स्वस्थ और समृद्ध बन सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और आयोजकों को और हमारी सभी ऑडियंस को पुनः एक बार मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलेंगे भारत माता की वंदे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for this wonderful speech. And he had been with us with his guidance and his presence yesterday also and today also. Thank you so much, sir. Now I would like to call upon stage Shri Madan Manav ji, Founder Director, Global Institute for Blissful Life, Instructions, Service and Security on Blissful Life. Sir, we are honored to have you here. I would like to request you to please come up on the stage and share your views on blissful life. ओम नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं अभी आप? परेशानी में, जाने की जल्दी में? हाँ, स्वाभाविक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
आयोजन में कई तरह की परिस्थितियाँ होती हैं और उन सबको समय अनुसार एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ हिमांशु जी को और उनकी पूरी टीम को कि आपने ये आयोजन किया। पिछली वर्ष भी आपने किया था और पूरे विश्व के स्तर पर योग से जुड़े हुए जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आपने जोड़ा। यहाँ जो कॉलेज में आपने कार्यक्रम रखा, ये बच्चे शायद इस विषय से परिचित नहीं थे, इनको आपने योग से जोड़ने का प्रयास किया। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा, यद्यपि थोड़ा विस्तार का मन पहले था, लेकिन अब आपकी परिस्थिति को देखते हुए मैं संक्षिप्त ही रख रहा हूँ। अभी ढाका राम जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आरंभ में दिया था और उसके बाद शिल्पी जैन जी, दीप्ति जैन जी ने लाइव सेशन आपका रहा। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको हम आधार बना करके यदि आगे बढ़ें तो इस सारे आयोजन का जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना, संसार का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनना, या कुछ और? संसार के सबसे धनी व्यक्तियों को आप जानते होंगे, सबसे सम्मानित व्यक्तियों को आप जानते होंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो अपने अंतर से खुश हैं या आनंद की तरफ हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है। तो हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, संक्षेप में ही मैं आपको बता रहा हूं, स्वयं सुखी और आनंदित रहते हुए दूसरों को सुख और आनंद देने का प्रयास करते हुए मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पाना। ये एक पंक्ति में मैं समझ पाया हूँ पिछले 28 वर्षों के अनुभव से, तो मेरा ये सार है आप सबके लिए। हो सकता है आप में से कोई इससे सहमत नहीं भी हो, लेकिन मैंने जो समझा उसको मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसको हम कैसे पा सकते हैं? दो स्थितियाँ हैं, एक स्थिति है सुख की, एक स्थिति है आनंद की। सुख हमें प्रकृति से मिलता है और आनंद हमें योग से मिलता है, परमात्मा से मिलता है। परमात्मा आनंद का प्रदाता है, प्रकृति सुख प्रदाता है। इन दोनों का जीवन में समन्वय करके चलेंगे तो हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। स्क्रीन थोड़ा, नेक्स्ट स्क्रीन। इसमें संक्षेप में आप पढ़ सकते हैं और वैसे ही आपको बाद में ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। अब इस समय को देखते हुए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट, जीवन के 4 भाग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल। आप यहाँ जो बैठे हैं मुझे लगता है कि इतना आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस सबको समझ पाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एक स्टेज है और बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सुख क्या है, और इंग्लिश में कई तरह के शब्द हैं, प्लेजर है, जॉय है, लेकिन सबसे जो पीक है या सबसे जो सर्वोत्तम कहा जा सकता है वो है आनंद की अवस्था। उसका कभी आपने कोई विरोधी शब्द नहीं सुना होगा। सुना है किसी ने? नागराम जी हमारे सीनियर हैं। आनंद का कुछ भी विरोधी नहीं है और उस स्थिति को पाना मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में साथ दे सकती हैं और बहुत बड़े बड़े काम भी कई बार साथ नहीं दे पाते हैं। अभी छोटा सा प्रयोग 2 मिनट का ही नागराम जी ने करवाया और मिस दीप्ति जी ने करवाया और उतने ही क्षण में आपने अपने आप को कुछ पहले से बेटर फील किया। ज्ञान का प्रवाह बहुत चल रहा था, लेकिन उस ज्ञान का प्रवाह से हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे जो हमें पाना चाहिए था। ज्ञान वर्धन हो रहा था दूसरे स्पीकर्स के माध्यम से, लेकिन हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे जिसके लिए हम लालायित रहते हैं। तो वो हमें कब किससे मिल जाए, उसके लिए कुछ आगे सूत्र मैं आपको और दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ये डिफरेंस है
तीनों स्थितियों में, और थोड़ा सा आप जब इस पर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा इसकी गहराई को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, हमारे ब्रेन में किस तरह के चेंज होते हैं, ये उसका एक मैकेनिज्म है। साइंस के स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसको विस्तार से बताने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन अभी वो संभव नहीं हो पाएगा। जो हार्मोन्स, हमारे हैप्पी हार्मोन्स जिनको आमतौर पर कहते हैं, वो उनकी स्थिति है, वो किस तरह से ब्रेन को हमारे को मैनेज करते हैं, किस तरह से हमें आनंद की अवस्था में ले जाते हैं। उसमें क्या ब्रेन में चेंज आते हैं, क्या बॉडी में चेंज आते हैं, वो सब हम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये केमिकल के चेंजेस जो हैं वो उनका और कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट, जॉय की स्थिति क्या होती है, इसको भी हमने एक्सप्लेन करने का यह प्रयास किया है। ये बाद में आप डिटेल्स में ऑनलाइन आप देख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्लिस क्या है, ये आप इस फाइल के माध्यम से अब जो स्क्रीन पर है उसको आप देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले सरल शब्दों में कहा, सार रूप में कहा कि इसका कुछ भी विरोधी है ही नहीं, तो वो जो अवस्था होगी आपकी, जिसको आप एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास शब्द भी नहीं होंगे, वो अवस्था आपकी आनंद की अवस्था होती है। नेक्स्ट, ये कुछ साइंटिस्ट ने जो आजकल काम कर रहे हैं इस विषय पर, उन्होंने अब तक जो जाना है, एक्सप्लेन किया है, उनकी कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये फिर से एक बार ज़्यादा डिटेल में हैप्पीनेस और ब्लिस के अंदर, खुशी या आम भाषा में इसको आप बोल देते हैं आनंद, वो अलग है, उसके बीच में अंतर बताया गया है। नेक्स्ट, अब आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने जो सीखा समझा है वो पॉइंट्स मैंने निश्चित किए हैं। 9 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रार्थना। नेक्स्ट, मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो सकती है तो वो इसी माध्यम से हो सकती है। इसके अलावा हमारी जितनी भी सांसारिक क्रियाएं होती हैं वो भी हमें दे सकती हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर है या सबसे पहला जो माध्यम हो सकता है वो प्रार्थना है। अभी आपने की भी है 2 बार प्रार्थना और आपने महसूस भी किया होगा इसका असर। नेक्स्ट, प्रार्थना के बाद, परमात्मा के बाद स्वस्थता को अपने यहाँ दूसरा स्थान दिया गया है, और ये नहीं है तो भी आप उस अवस्था को, आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव अप्रोच। यदि हम नकारात्मकताएं देखेंगे तो फिर तो बहुत सारी हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, लेकिन उन्हीं नकारात्मकता में यदि हम पॉजिटिविटी तलाशेंगे तो वो हमें जो कुछ महसूस कराएगी उसको आप आनंद की अवस्था कह सकते हैं। नेक्स्ट, हर स्थिति में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वो कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता, उस रोने की स्थिति में भी यदि कुछ आप तलाश लेंगे, जैसे अभी मुस्कुराहट की बात आप कर रहे थे, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है तो हम ज्यादा इजीली उसको फेस कर पाते हैं। हाँ, 5 तत्व, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ने से भी समस्याएं आती हैं, और उनका संतुलन रखेंगे तो भी आप आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो पाचन तंत्र की बात है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात आपको कहना चाहूंगा इसकी उपयोगिता के लिए। बच्चे एक बार सुनिएगा जरा सामने, ये चीजें फिर आपको शायद होता है इतनी आसानी से ना मिले। जो आज हिमांशु जी ने प्रयास किया है, इनके प्रयास को सार्थक कीजिए। आज बहुत बड़ी बात होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के माध्यम से प्रोटीन पाउडर की, न्यूट्रिशन के लिए कितनी तरह की चीजें बना दी हैं, या हम घी, दूध, मक्खन, मलाई की बात करते हैं जिसमें हम ताकत मानते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमीन पर सबसे ताकतवर जीव है हाथी, और सुबह से शाम तक दौड़ने वाला कंटिन्यू जीव है घोड़ा।
ये दोनों कोई प्रोटीन पाउडर खाते हैं क्या? कोई अन्य प्रोडक्ट ताकतवर जिसको आप मानते हैं, जिसका टीवी पर ऐड देखते हैं, वो खाते हैं क्या? तो ताकत उनमें नहीं है। ताकत कहीं जहाँ है वहाँ हम तलाशते नहीं है, वहाँ उसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें बिजनेस नहीं है। हमारा पाचन तंत्र यदि ठीक है तो हाथी घास और पत्ते से भी उस ताकत को प्राप्त कर लेता है, घोड़ा उस ताकत को प्राप्त कर लेता है। और जब शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तभी हम साधना कर पाते हैं, तभी हम उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बड़ा एक रोल है आनंद की अवस्था को पाने के लिए। नेक्स्ट, प्रॉपर लाइफस्टाइल। जब से हमने ये बिजली बना ली है तब से रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करते रहते हैं और फिर दिन में 10 बजे तक सोते रहते हैं। ये जो इस तरह का इम्बैलेंस हमने कर लिया है, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज कर लिया है, वो हमारे सारे समस्या को दे रही है और हम सब यहाँ जितने बैठे हैं सब इसको भुगत रहे होंगे। तो जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इस आनंद की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए आप कहें, और जितने भी साधन हमारे जीवन में बढ़े हैं, घर में जब से फ्रिज, ओवन और जितने जो भी चीज़ें आजकल आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, सब ने हमारे समस्याओं को बढ़ाया है। तो उनसे बचाव करके प्रकृति की तरफ लौटेंगे, परमात्मा की तरफ लौटेंगे, योग की तरफ लौटेंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति हो पाएगी। नेक्स्ट, योग साधना। वो अभी सुबह से हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, इसको बारे में आप ज़्यादा देर से समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट, हाँ, आज की फास्ट लाइफ है और यदि हम कहें कि आपको 2 घंटे योग अभ्यास करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो 24 घंटे में 24 मिनट का अभ्यास कौन सा हो सकता है जिसको करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आनंदित रख सकते हैं। वो मैंने 1 सप्ताह का एक सिलेबस फिक्स किया है, इसको फॉलो करके आप अपने आप को स्वस्थ, सुखी और आनंदित बना सकते हैं। आप यदि चाहेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट। अब आजकल ये हमें अवेलेबल ही नहीं है। जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं सब वो सब हमारे इस स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इसके बारे में आप बहुत विस्तार से आप जानते हैं रोजाना मीडिया के माध्यम से, तो ये समझ गए होंगे। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यदि आप वास्तव में अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, स्वयं सुखी स्वस्थ रहते हुए दूसरों को सुख प्रदान देने का प्रयास करते हुए मोक्ष को पाना, उसके लिए ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो मैं परमात्मा को याद करते हुए इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन आनंद में रहेगा। आखिर में 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। जीने के 2 तरीके हैं, आ करते हुए जीना और वाह वाह करते हुए जीना। कौन सा चाहिए आपको? तो वाह वाह करते हुए जीने के लिए जरूरी है कि ये जो कुछ बताया गया है सुबह से शाम तक आज आपने सुना है या कहीं भी अन्य सुनेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको आचरण में लाना होगा। आचरण में लाएंगे तब ठीक रहेंगे। लेकिन आज हम अपने आप को क्या बना रहे हैं? मनी मेकिंग मशीन बना रहे हैं। बच्चों के लिए एक ही टारगेट रहेगा कि बड़ा सा हमें पैकेज लेना है, तो हम मनी मेकिंग मशीन बन करके जीवन के आनंद को नहीं ले सकते हैं। और उसकी सार्थकता क्या है वो सब आप जानते भी होंगे। 2 पंक्तियां मेरे साथ दोहराइएगा। हूँ मैं यदि बीमार, बोलिए, अरबपति होना बेकार। हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं? तो इस बात को आगे ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपने मुझे धैर्य से सुना। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir for your awesome speech. हूँ मैं यदि बीमार तो अरबपति होना बेकार। Don't make yourself a money making machine. खुश रहिए, blissful life जिए। हाँ ताली। So our next speaker is Dr. Arun Joshi ji. आप सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत सारे गुणी जनों ने और ज्ञानी जनों ने योग के बारे में बहुत कुछ बता दिया और मैं अब और ज़्यादा उसका व्याख्यान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 5 मिनट में
मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा योग के बारे में, क्योंकि मैं एक चिकित्सा जगत से हूँ। तो योग जो है उसके दो आयाम हैं, एक है स्पिरिचुअलिटी और एक है साइंस। तो मैं थोड़ा साइंस पक्ष रखना चाहता हूँ योग का, कि योग साइंस कैसे है। और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने एक्सपेरिमेंटेशन से या और बहुत सारे अनुभवों से ये सीखा है और प्रूव भी किया है कि योग जो है वो वाकई में एक विज्ञान है जो आज की कसौटियों पे भी खरा उतरता है। और उसके पीछे जो हम उसके प्रभाव देखते हैं उन सब के साइंटिफिक आंसर्स भी हैं। जैसे कोरोना काल में एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, इम्यूनिटी। इतना ज़्यादा ये शब्द प्रचलित हुआ कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे सिरप्स, यहाँ तक कि पापड़, मिठाइयाँ सब इम्यूनिटी वाली आने लग गई कि साहब इससे खाने से, इनका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। योग में भी ऐसा ही एक शब्द जुड़ा कि साहब योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब क्योंकि मैं हेल्थ एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ और योग एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ, एकम योगा में हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको योग की साइंटिफिक बारीकियों के बारे में बताते हैं। तो योग से इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि साहब दवाई का तो समझ में आ गया, उसमें जिंक है, उसमें विटामिन हैं, योग से इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? योग करने से साइंटिफिकली इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर वैज्ञानिक तरीके से देना जरूरी था, तभी सामने वाला व्यक्ति, तभी आपका छात्र, तभी आपका पेशेंट सेटिस्फाई होगा आपके उत्तर से। तो इसके पीछे जो वैज्ञानिक रीज़न निकल के आया और जिसको नहीं भी पता है वो भी अपने स्टूडेंट्स को या पेशेंट्स को ये समझाएं कि योग से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। जब हम योगासन करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इम्यूनिटी, जैसे टी लिम्फोसाइट्स, ऐसे बहुत सारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो विषाणु, कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरसेस को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अब योग क्या करता है? योग आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब लिम्फेटिक सिस्टम की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो लिम्फ आपके शरीर में हर एक जगह जाएगा और आपके इम्यूनिटी सेल्स को भी वहाँ पहुँचाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे उनको वो तत्काल समाप्त कर देगा। तो इसलिए साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक आधार पे भी जो है ये प्रूव हो चुका है कि योग इज़ अ कंप्लीट साइंस फॉर हीलिंग योर बॉडी एंड योर माइंड। आत्मा और मन को तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये रोग को भी दूर करता है, रोग को भी ये भगाता है। अब किसी ज़माने में जो योग था वो पहाड़ों और जंगलों में था। अब योगा स्टूडियोज़ में, हॉस्पिटल्स में, थेरेपी सेंटर्स में भी आ गया है। तो इसलिए इसकी साइंटिफिक व्याख्या या इसके साइंटिफिक आंसर्स ढूंढने जरूरी हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, ये हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है हमारे हॉस्पिटल में। जिनको राइनाइटिस, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, उनको हमने भ्रामरी प्राणायाम करवाया और वो करवाने के बाद जो हमने रिजल्ट्स देखे तो वो मेडिसिन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर निकले। और जब इसकी रिसर्च की गई, पता किया गया ऐसा क्यों है, तो ये समझ में आया कि भ्रामरी करने से आपके साइनसिस में नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके साइनसिस में इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। तो आप
साइनसिस और राइनाइटिस की समस्या से छुटकारा पा सकें। तो ये दो उदाहरण देने का मेरा मकसद केवल यही था कि हम योग को साइंस की दृष्टि से एक्सप्लेन कर सकें। स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से तो बहुत लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब हम इसको विज्ञान की दृष्टि से भी एक्सप्लेन करें और ये समझें कि किस प्रकार से ये एक स्वस्थ शरीर को जन्म दे सकता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रह सकती है और स्वस्थ मन रह सकता है। बस मैं इतना सही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, Dr. Sahab, for your awesome speech about Swasth Sarir and Swasth Man. Now I would like to call virtually Dr. Shakti Kumar Pandey. He is head of the department English, retired from an affiliated college of Allahabad State University. Currently, he is involved in yoga and life skills training through his organization called Sanmark Foundation. He is also life coach about life. So one can consult him if they are having any kind of problem like mental problem or depression or family problem. He is a very good consultant also. So I would like to invite Dr. Shakti Kumar Pandey to please come up virtually and address our audience in the hybrid mode. I hope my voice is clear. Okay. First of all, while speaking about yoga, I would like to make it very clear that there is a lot of confusion amongst people, especially in the Western countries. They consider the physical asanas as yoga. And even many Indians consider yoga as the physical asanas, whereas asanas are only a part of the system called Ashtanga Yoga. There are eight steps. According to the Patanjali's system of yoga, there are 8 steps, which we describe as yam, niyam, asana, pranayam, and pratyahar, dharana, dhyana, samadhi. But most of the Indians and almost all the Western people think that the physical exercises known as asanas are yoga. So this confusion, this misconception, I want to clear in the very beginning that yoga is a complete system of physical and spiritual mental practice. When we want to attain health and happiness, when we want to achieve perfect health and happiness, we have to practice yoga. But that yoga is a complete system in which there are different parts: yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. I don't want to go into the details, the theoretical and the philosophical details of it, because I am more concerned with the applied yoga. I call it applied yoga, the yoga that we can apply in our day-to-day life. When we want to lead a happy and healthy life, when we want to live a stress-free life,
we have to practice this yoga, which I am talking about. Of course, we practice asanas also, because we have to keep our body healthy. We have to keep it flexible. Unless we have a flexible body, we cannot be healthy. Unless we have a healthy inner organs like lungs, heart, and liver, unless we have them healthy and fit. And for that, we have to practice pranayama. Pranayama is very helpful for our inner health, the health of the inner organs. And asanas are very helpful in keeping our body flexible. So they have their own role. But when we think of our mind and the health of mind, we have to proceed further. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. In Patanjali's system, I don't want to go into the details of because this is a very deep subject, and this subject is related to the scholars and academicians and learned people, philosophers. I am concerned here with, as I said earlier, I am concerned with the day-to-day practice of yoga, the applied part of it, that part of yoga which is helpful in making us healthy and happy. So from that point of view, also the formula which is very popular in the system of yoga, yoga chitta vritti nirodha, it is very common, very popular. And although it is, it has a long philosophy behind it, and a great deal of description is required. But the applied part in which I am interested, there also the role of yoga chitta vritti nirodha takes place. When we talk of yoga chitta vritti nirodha, we mean that we have to stop all action. We have to stop all action of body and mind, both. All the mental activities, all the mental processes, all the physical action must be stopped. My Guru, Swami Dakshinamurti, says that when you practice yoga chitta vritti nirodha, and when you try to stop all action, there are some actions which you simply cannot stop. And therein lies the sutra of happiness. He gives the example of our breathing. He says that you can't stop your breathing, because breathing is not something done by you. Breathing is a natural and a divine phenomenon. So breathing you can't stop. Anything that is divine, anything that is natural, anything that is spontaneous cannot be stopped by you. But when you try to stop all action, the benefit of this stopping of all action is that you are able to identify. You are able to focus upon those things which you are not able to stop. The spontaneous emergence of action. And that I consider as self-knowledge. That is the source of self-knowledge. When we are able to find out what are the things which we cannot stop, what are the actions which are inbuilt, what are the activities which we cannot stop, which are natural to us, we are able to attain self-knowledge, or I even call it self-realization. Self-realization is a very complex subject matter, and it is a very abstract and transcendental condition or experience
in the system of yoga. But as I said earlier, I'm not concerned with its transcendental and abstract philosophy. I'm concerned with the practice of day-to-day yoga, its applied part. And that is why I call it applied yoga. So in my applied system of yoga, when we practice yoga chitta vritti nirodha, and when we try to stop all action, we are able to identify, we are able to find out what is in us that is spontaneous, that is natural, that is coming out naturally, that is emerging from us. And that is what in Gita is called our swabhava. Swe swe karmanya bhiratah sansiddhim labate nara. The action which belongs to our swabhava, we cannot stop. And we are supposed to promote it. We are supposed to strengthen it. We are supposed to engage in that action. We are supposed to involve in that action. Bhagavan Krishna in Gita, several times he has spoken about Swe Swe Karmanya Bhirata. Swabhava Janit Karma. The action which relates to our Swabhava. That action is the source of joy. Otherwise, all actions which are not related to our inner source, our Swabhava, which are not inbuilt, which are not spontaneous, that will lead to stress. That will lead to a stressful life. And if we want to live a stress-free life, if we want to attain happiness, if we want to achieve health, then we will have to find that action which lies in us, and we have to bring it out. This is something practical, something worth practicing, and through which we can attain inner happiness. The concentration, meditation, dharana, dhyana, samadhi. In the description of scholars, yogic scholars and the philosophers, this is a very complex and abstract subject. But I have tried to simplify it. That when we try to attain self-knowledge through this practice of chitta vritti nirodha, that self-knowledge helps us in finding out our swabhava. And when we are able to find out our swabhava, we are able to engage in the swabhava janya action. And that is the purpose of life, that is the goal of life, and that can help us attain health and happiness. And the very interesting fact is this, that when we try to bring tranquility internally, we also become healthy outwardly. Our external and physical health also depends upon our inner equilibrium, our inner peace of mind, our stress-free life. So both are interrelated. When our mind is stress-free, it leads to happiness. And when we have it leads to better health. And when we have better health, it helps us in restoring the peace of mind. So the physical health and mental health are interrelated. And yoga is a source of self-knowledge. Yoga is the source of self-realization through which we are able to acknowledge, we are able to find our real swabhava. And when we are able to identify our real swabhava, we are able to find our direction. We are able to find the direction.
Thank you so much, Dr. Shakti Kumar Pandey, for sharing your views on yoga and Adhyatma. And due to some network issues, it got disconnected. But still, we listen to each and everything. And it was awesome. And we are honored to have you here virtually. Thank you so much, sir. Now the next speaker is Dr. Bini Sareen, Regional Director, Global Peace Initiative USA for India, Director General, International Peace Initiatives, All India Council of Human Rights, Chairperson for Values by Women Economic Forum, awarded first doctorate in subject of spirituality and universal values, and received appreciation and recognition from President of India. An enlightened spiritual leader, author, trainer, management consultant, relationship advisor, expert for conducting meditation and spiritual enhancement subject at national and international prestigious platforms in many countries. I would like to invite Dr. Bini Sareen virtually to address our audience on hybrid mode. Namaskar. Oh, can you hear me? Namaskar. And very, very special greetings of International Yoga Day. First of all, I would like to congratulate our organizers, whole team, and Himanshu Pandey ji for giving me this opportunity to be with all of you on this very, very special day. We were listening from our very experienced galaxy of speakers, yoga acharyas, and many eminent speakers. And they had already shared so much regarding the definition of yoga and also the benefits of yoga. And I feel that I would like to take you to the journey of meditation, so we can experience the moments of silence and inner bliss. Yoga meditation is the unique art and science of healthy living. As it is said that word meditation is derived from Latin language mediri, which means healing. But what kind of healing? It is mental, physical, emotional, and also spiritual healing. And when the healing takes place, it is something very natural changes in our day-to-day life. Just to simplify, what is the ABCD of meditation? E means self-awareness, knowing myself, who am I? The moment you realize, who am I? The journey of yoga and meditation starts. There is no need to wait for long, long years. But my experience is that you can experience in a short time also. If you are determined, if you have full dedication that I have to be with the natural and the inside journey. For example, I started my journey 50 years back, and I have completed my everyday yoga I'm doing from last 50 years. And it is a wonderful journey. And I really want to give special greetings from the headquarters of Brahma Kumaris, Mount Abu, where I'm sitting right now, that
through our 8,000 centers in India and 140 countries in the world. We all as a one family, we are practicing meditation every day. And our journey starts in the morning, 4 o'clock. Every day without fail we are doing. And what is the result? The result is that it is so much health, wealth. Wealth means spiritual wealth. So hope, health, and happiness in our day-to-day life. So realization, A means it is awareness. But what kind of awareness? Self-awareness, self-understanding. And when we have more self-understanding, then automatically we can realize self-awareness, self-understanding, self-realization, and self-introspection. Very important part of the meditation that we have to introspect, जिसको कहते हैं आत्म निरीक्षण. Yogesh Vritti Nirodh, we were listening just now, previous speaker mentioned how it is possible, how we can control our negative thoughts. It can be possible only when we introspect ourselves, we check and we change and we choose right thoughts, auspicious thoughts, elevated thought, positive thoughts, and the thoughts, those give happiness to others. So when introspection is there, that is self-introspection, then automatically will be last self-empowerment, जिसको अनुभूति भी कह सकते हैं. We realize, we become very true to ourselves, and it is the जिसको स्थिति भी हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं जिसके अंदर आप भीतर और बाहर से पूरी तरह से प्रकाशित होकर विश्व को भी प्रकाश दे सकते हैं. So I request you that kindly join me few minutes, few seconds for this live meditation with the music. I will be going to give you guided thoughts. Let us be together and just not only create happiness within, but let's spread it to your family, to your society, and to your country. Normal breathing. Relax yourself. Smile and breathe. Take a deep breath. Meditation means inner smile. Just remind yourself of very simple 3 steps of meditation. Yoga means connection, union. Thank you, Dr. Billy Serene.
for your awesome presentation virtually to our viewers in the hybrid mode. Now I would like to request Yana Fraiji, spiritual teacher and life coach, in conversation with Neetu Birla ji, to come up virtually and address our very respected audience and online viewers. So I would like to request Yana Fry to please address our audience virtually. Good day, everyone. My name is Yana, and I have been doing yoga since I was 8 years old. And one of the most common questions I'm being asked by people, especially those who live in big modern cities, is what is yoga in a modern practical sense? And why would we practice it at all? And if we look at it, what previous speakers here also have been saying, that traditional definition of yoga means unity. It is the unity of the individual consciousness with the universal consciousness, harmony between mind and body, man and nature. And the big question is, how does it actually show up in real life, this practice? How can we truly benefit in our relationships with people that we interact daily? And in my experience, people who practice yoga in the right way, and under the right way, I mean they do it for themselves, first of all. They are in it not because of the competition, not because their neighbor or their family member is doing it, but because they understand that it is their own development, their own evolution. And they are not competing with anyone, not even with themselves from yesterday. They are just purely present in the moment with their practice, whatever practice might take form on a particular day. And so people who do it in such a way, then over the years, I noticed that they are genuinely become kinder and more accepting. Their hearts become softer. Their words become more compassionate towards other people. And also their mind stops rushing. We still have thoughts, and yet at the same time, able to sit in silence, just how we did now in this beautiful practice with the previous speaker, where even though we talk and we are looking at each other, at the same time, we have this vast silence in our mind. And in my experience, this is exactly what yoga is bringing. And that's why it is so important that everyone, and I really mean it, it doesn't matter who you are, where you live, what you practice, what is your religion, or maybe you're an atheist, whatever your daily circumstances are, fundamentally, yoga helps you to understand better yourself. And when you understand yourself better, then you can also understand better other people. And the way how it shows up in the relationships with people. Let me just ask you this. Have you ever been in a situation when you are talking with someone and you clearly notice that this person is just not present? They're not listening. Their eyes rolling all over, or they're checking their phone, or maybe you can see they're genuinely nervous in their body. And how do you feel then in those moments? And when I ask these questions to many people, the common answer is that they feel uncomfortable. They feel that they are not important, that what they are saying is not important. They feel that the person in front of them tells them non-verbally that the relationship that they have is not important. And the reality of life,
that we see those situations very often, both at home with our families or with our colleagues and business partners in our professional life. So what yoga does fundamentally, it teaches us how to be truly present with ourselves and with other people, even if you have a very busy modern life, even if you live in a big city with a lot of noise, a lot of activities, and you have maybe a very full schedule, or maybe your mom who has many kids of a small young age, and you're just very busy. There's a lot of life happening around you all the time. And yet, when you find a moment to practice, then you will see when you do that consistently, day after day, year after year, then you will be much better equipped to deal everything with what life is showing up for you on that particular day. And it is significantly improves relationships with people around us. And probably the most important, we often talk about our mind, that for most people, and even for yoga practitioners and yoga teachers, it has been a part of their life until they mastered it enough. That we often say that the mind is the master of us. And many people just live lives of being servants, where the mind tells us what to think, what to say, to whom, under what conditions, what to do. And when we allow that to happen, it is as if you would be giving a child permission to drive your car. In reality, we all understand the consequences. So it is very interesting to watch that for most people, they're still allowing their minds to drive their life with all the consequences that are happening as a result in their families and in their businesses and in their social life. And one of the biggest benefits of yoga, especially in the modern days, where we are just so incredibly overstimulated by social media, by TV and programs, by marketing and advertising, by the opportunities that we have now that generation before us did not have. Like our parents, they did not have the internet and ability to talk the way we are doing right now across continents. They were not so flexible with traveling the way we are right now. They perhaps didn't speak as many languages as we do. So our life definitely became faster. And we definitely have many more stimulations for our senses. And as we all know, when we look at the traditional definition of yoga and when we look at the 8 limbs of yoga, so one of them, it is exactly about senses, being able to have the absence, being able to not react to what is happening around you. And so when you practice yoga in a really pure way with the right teacher who understands your mind, who understands your life, who knows what your body is capable of. When you do it in that way, and it is always a blessing to meet such person, then you will see that your mind gets quieter in a good way. You can still be very extroverted and very outspoken person, but even in the midst of the very busy party or business meeting, or maybe your child birthday celebration with many other kids, you will keep that silence and that stability within yourself. It is like the ocean, right? When we talk about the waves on the top of the ocean, all the activities that all of us are doing one way or another. And at the same time, we have this connection with the depth of the ocean, with this very unchangeable part of our mind, that part of consciousness that has never been born, will never die, never going to be changing. It has always been there, is there, and will always be there.
And we are just a part of that. And our daily lives are simply reflections. It's like a moon reflecting itself in the water. And the more we practice regularly in a pure way, the more we build this connection between the depths of the ocean and the waves at the very surface, so that whatever is happening in your life, you are still connected very deeply to who you are and what you are in your truth. And I know that we have been giving you a lot of information, and there have been many amazing speakers at this conference. So I would like to finish my session with 3 minutes meditation that just helps us to settle our minds and connect with that parts of ourselves, which I feel is so important for daily life. So wherever you are, just make yourself comfortable and gently close your eyes and just take with me a deep breath through your nostril. And deep exhalation through your nostril. Centering your mind. And one more time, a deep inhalation through your nostril. And deep exhalation through your nostril. Allowing yourself to relax deep within yourself. And one more time, deep inhalation through the nostril. And deep exhalation. Bringing all your attention in the very center of your heart. And we are going to stay here in silence for the next 30 seconds. And now take one more deep breath through your nostril. And deep exhalation. Feeling your physical body again. One more deep inhalation through the nostril. And deep exhalation. Feeling your presence at this very moment. One more time, deep inhalation. And deep exhalation. Noticing the changes in your mind, changes in your body, and a gentle, soft smile from your heart. And when you're ready, you can slowly and gently open your eyes. And let's continue with the next speaker.
Himanshu, shall I continue? I guess so. Thank you, Yana. That was indeed very, very wonderful, the way you conducted that meditation. It was indeed very calming. Thank you so much. You're most welcome. So I'm assuming that I have to start my session. Yes. Yes, Himanshu. Daily life. Now I would like to request Mr. Tanuj Narayan ji, Senior Yoga Trainer from Art of Living, to please address our audience virtually. Thank you so much. It is indeed very, very nice that this kind of session is being organized by Youth News Online. Congratulations, Himanshu ji, and all the speakers who have taken part in this wonderful session about yoga. So I will not bore you about the basic tenets of yoga, because many of the speakers have spoken excellently, speaking about what is yoga and what it is not. So normally we all of us are thinking that yoga means asanas. So it is just one of the 8 limbs of yoga, as Maharishi Patanjali, he was the first person who actually has given the details of yoga in a very organized way. Okay, so there's a lot of word today about, there's a lot of conflict going on between religions. आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जब भी आप न्यूज़ चैनल आजकल खोलेंगे तो रिलीजन्स के बीच में उन्होंने इसके बारे में बोल दिया, उन्होंने कुछ इसके बारे में बोल दिया, आपस में टकराव हो रहा है. उसका समाधान योग में आता है, बिकॉज योग इज वेरी साइंटिफिक. It is the essence of all religions. See, spirituality and yoga are the basic essence of what the religions are teaching us. Religions are, what are religions? They are focusing on certain rituals, certain symbols, certain pictures. But what is the essence? The essence is being taught by yoga. It is like science. So science is understanding what is this, what is the matter, how does our organized, how does the outside world function, what is this, is called science. When you present it in an organized logical fashion, then you call it is scientific. And what is yoga? Yoga is also a scientific, a very organized way of understanding who am I. What is this is science, who am I is yoga. So once we understand that yoga is scientific, then there is no scope for conflicts. We are not fighting with each other about the principle of gravity. We never are questioning Newton's law of motions. So what is scientific is accepted all over the world. So the answer of the conflict of religions lies in yoga. So one of the sutra of Patanjali says very specifically what is God, who is God. They describe God. So different people of different mindsets, religious mindsets, they will give their own definition of who is God, what is God. But in Patanjali Maharshi's Yoga Sutra, he says, Tasya vachakah pranavah. Pranavah, that sound is God. A particular sound, that particular wavelength is God. And what is that sound called? He called it Pranava. Pranav is God. God can be addressed as Pranav. So now what is Pranav? It is a particular wavelength. It is a particular frequency, which is called as Om in Hinduism, Buddhism and Jainism, which is called as Amin in
amongst the Muslim community. It is also known as Amen, the first word of God in Bible. Then in the Parsis called it as Hum. In Jews, they called it as Shalom. In deep meditation, there's a very nice book by Dr. Eben Alexander. He was a very senior neurologist, and unfortunately he himself went into a deep coma. He had near-death experiences, and in that state of transcendental state of comatose state, he experienced this sound, this God sound, which is nothing but Om. He did not know about Om. He had not studied about Om. He had never heard about Om. But when he came back from coma to consciousness, he mentioned it in his book, Dr. Alexander, I heard this sound, which was nothing but God. So, in yoga, many of our speakers, they have very specifically commented that yoga is nothing but the union of the body, mind, and God. So, how do we actually do this connection? That particular style, that particular methods is being listed out through these various treatises called Patanjali Yoga Sutras. So it's considered the best. There are many more manuals on yoga, but Patanjali Yoga Sutra is considered one of the best and one of the foremost sutras about yoga. That also, they have not mentioned about all the asanas, or they are just mentioning things in aphorism style, in sutra style. They're just directions. They're just like milestones. He mentions some milestones. He does not give the entire way. One more reason for this is perhaps because the yoga can encompass all different, and it can take on and encompass all different styles which are being propounded by different religions. Yeah. So I was just wanting to speak more about this. And second aspect which the today's world is facing is this violence. When we see this incident which happened in Texas, in United States, that youngsters resorting to gun violence, so many people dying, and they don't know how to release that anger, how to release these negative emotions. The secret and the solution again lies in yoga. Let us first understand, I request all of you who are listening to this wonderful symposium organized by Youth News Online, please do not restrict yoga only to asanas. It's not just bending your body, it is bending your mind towards infinity. It's not bending your body, it's bending your mind towards that one source, that one infinity. So the solution which psychiatrists are looking for, or behavioral psychologists are looking for, to reduce this mindset of violence lies in yoga. When Patanjali was talking about this yoga, one of the sutras says, Prayatna Shathilya Ananta Sapapati Bam. Matlab, that you don't have to do any efforts to go into that yogic state. It is effortlessness. And when you are in that effortlessness, you reach to that Ananta Samapatibhyam. You reach that highest knowledge. You reach to that highest goal in which you are able to get rid of your fears, of your anxiety, of that violence, of that depression, of all kind of negativities. And then you are able to be skillful in your karma. That is also one of the definition of yoga, that it brings skill in the way you speak, in the way you do things. It brings stability in your mind. So when you are watching things in that drishta bhav, when you're looking things in that consciousness which is called sakshi consciousness,
when you are not associated with the vrittis of the mind. What is this vrittis of the mind? We are lost in our own thoughts. We are lost in patterns. There are certain patterns which again reoccur again and again and again in our lives. If you notice, the last time you got angry, what was it? Some person did not do the things as you had thought you had wanted. And before that episode of anger, why did you get angry? Again, the same thing was there. Somebody did not do things according to what you had thought. So there are certain patterns in our mind. There are patterns of depression. There are patterns of anger. There are patterns of negativities, and these are called chitta vrittis. Going beyond these vrittis, going beyond these certain patterns which occur again and again and again, understanding these patterns is yoga. So one of the way to do it was connecting yourself with Om. There are obstacles also in yoga. So Patanjali says that to remove these obstacles, take the Sharan of Om, of Pranava. So we can do one thing. This Om also gives a lot of solace to us. So as per the Big Bang Theory, the first sound which came in this world was Om. It is the primordial sound. From that sound, all other waves have come in. Even atom molecules, all of them are nothing but waves. And sound Om, our consciousness is also a wave. This sound Om is also a wave. So one wave interacts with another wave and it creates a ripple effect in our consciousness. So that's why these mantras, these Om, these sounds also creates a lot of solace and changes the way we think actually. So this Om is actually built up of 3 parts. So let us do one thing. We can do this exercise. Let's breathe in and let's say All of us can do this. Please do this once again. Breathe in and just say aankhein band karke So when you say you will notice that there will be vibrations in your stomach area. This is called the Brahmasthana, the area where procreation happens, where creativity happens. Those chakras get activated when you're saying Actually, there are 21 different ways in which you can say itself. So there are many ways of saying So now let's see the second part of Om, which is Oo. Let's chant Oo. Let's breathe in. All of us will do it together. Oo. So when you are saying Oo, where did you feel vibrations? You will notice when you're saying Oo, you feel vibrations in this part of your body, the middle part. Now this is the part where most of the organs which sustains your body are there. So this is called the Vishnu Sthan. The heart, lungs, they get activated. Those chakras get activated when you're saying Oo. And let us now say Ma. So Ma we'll say with our mouth closed. So let's breathe in and we'll say So when you're saying where did you feel the vibrations? Yes, most of you have got it correctly. You felt vibrations in this area. This is the Shiva Sthan, the Sthan of knowledge and also transformation, destruction. Right? We're destroying everything through analyzing everything and taking it apart from our brain, from our mind. Yeah. So knowledge and destruction happens through this, and there is no creation possible. Creation is possible only after destruction. So these 3 components, the Brahma, Vishnu, Mahesh, generation, operation, destruction, G-O-D, God, all 3 get integrated when you're saying Om. So let's chant Om for 3 times. Close our eyes. Breathe in.
Let's say it together. एक लंबी गहरी सांस अंदर लें. Let's take a long deep breath in. Last time. गहरी सी लंबी सांस अंदर. Let's keep our eyes closed and feel the stillness within us. So that stillness is the source of activity. We need potential energy so that it gets converted into kinetic. So when you are doing these practices of meditation, yoga, what happens is that you're developing this potential energy within yourself. And that potential energy then can be used by you to make your world of work, relationships, and health better. So yoga is nothing but bringing that skill within you. So I'm so grateful to Himanshu for inviting me for this session. I think so we are towards the last, and all the last speakers are the showstoppers. Thank you for making us the showstoppers. Thank you, Himanshu. So may I call the next speaker, and please take it ahead from here. Thank you. Thank you, Mr. Tanuj Narayan ji, for your awesome session on International Yoga E-Conclave's final day. We are overwhelmed and honored to have you virtually. Thank you so much, sir. Now, proceeding our session next, I would like to invite Mr. Gaurav Prakash ji. Mr. Gaurav Prakash is a third generation business entrepreneur and belongs to the family of universal booksellers, serving the city for over 80 years. Currently, he is State Chairperson, MSME Growth, CIM SME, former Co-Chairperson, PhD Chamber of Commerce and Industry UP in 2018, 19 and 20, former Chairperson of Young Business Leaders Forum, Uttar Pradesh, founder chairperson of Young Indians with the Confederation of Indian Industries UP. It's our pleasure to invite you virtually on this international platform. Please proceed the session with. Thank you, sir. Thank you so much for having me over to such a wonderful session. And I would like to congratulate the entire team of Youth News Online, especially Himanshu, that he has been continuously making all of us, the citizens of India, aware of what the importance of being well is, wellness industry is, and yoga, the importance of yoga is. So, and yes, it's a fabulous build-up to the International Yoga Day, which is happening on the 21st of June. And we are all looking forward for it. And Himanshu ji, thank you so much for having me, and your wonderful team for having me to your wonderful show on yoga, and especially a warm welcome to all the students of arts, Delhi College of Arts and Commerce who are hearing this session. And I'm sure the students must be hearing the session. I've been hearing such wonderful speakers who give such beautiful inputs about the importance of being well and synchronization of spiritual and well-being and spiritual and physical well-being. So I think it's very important that at the end of the day, how you are beautifully connected to the universe, your inner self, how it is so beautifully connected to the inner world and the outer world. I must tell you from the industrial aspect, since I'm representing the industry and yoga, wellness, you call it Ayurveda, Naturopathy, Unani, Siddhi, it's all a part of Ayush industry. Ayush industry has been a successful model by the government of India to bring about actually, know how in today's world, which is the most stressed world, especially the business fraternity, the industrial fraternity,
who are and youth who are trying to create a different kind of a niche for themselves. We are too stressed. This economy is too stressed. Whether it's called about projections, whether you're trying to establish yourself, whether profits are in low, whether there's so many technologies coming up, you are unable to grow up. The startups are collapsing. The youth who are wanting to get a desired jobs are not getting desired jobs. This gives a comprehensive outlook on and direct effect on your health. And today, if we are not mentally at peace with ourselves, as Tanuj Bhai has always been so wonderful in his communications, and his pleasant smiling face always has a different appeal. Thanks to such wonderful teachers, people in the industry are actually indebted towards them, that we get the balance of how to move ahead in life, balance of peace, balance of harmony, balance of goodness, balance of just having healthy bonds with people are all around. And this all boils down to how beautifully you are in sync with your inner self. If you are at peace with your inner self, only then you can go out and give peace and happiness. So today, people should understand that for the first time, instead of all the youngsters who want to be successful and gain a lot of money, it's so important first to keep your health intact. As the elders have always said, "Jahan hai to jahan hai," or health is the true wealth. And actually, we have all realized that post-COVID scenario, where actually every household had a medical issue, and we realized the importance of what is good health. And there's a very beautiful thing, I came across. It said, when you are alone, mind your thoughts. When you are with your friends, mind your tongue. When you are angry, mind your temper. When you are in a group, mind your behavior. When you're in troubles, mind your emotions. When God starts blessing you, mind your ego. So when all these things of your life are happening one by one, only you can move ahead if your health, your body, physical, mental, spiritual, mind is intact and in a healthy condition. You can always be in control of your emotions or your anger or your well-being or your happy quotients only when your body is in control, your emotions are in control of your inner self and your outer self, which is directly connected to the universe. So I personally feel today the industry is definitely overcoming the post-COVID scenarios. The stress levels are definitely very high. Youngsters who are wanting a good job profile, a good professional life standings in their lives, they need to be actually healthy mentally, healthy spiritually. And when you have a good collaboration of your body, mind, and space, boss, magic and miracles do happen. And I was hearing this beautiful interview by Akshay Kumar the other day, and he said so beautifully that a man who cannot spare 1 hour on himself out of the 24 hours is actually, he's a misguided missile. You have to be spending 1 hour minimum on yourself out of the 24 hours. If people have complaints that, no, I don't have time, I am running in a rat race, and even if you win that rat race, you'll still be a rat. So you have to spare that 1 hour of solitude where your body is at sync with your self, your conscious mind and your subconscious mind are together, and you can recharge yourself. Like a mobile needs a battery charger for recharging, same way our body needs recharging. Sleep, they say, is very good, but then sleep just gives you a kind of a booster to get up, heal your inner self, and go ahead for the next day fresh. But then a physical or a mental or a exercise of which connects to your inner self gives you enough strength to understand what wisdom is all about, what life is all about, what relationships are all about. And it's not about only money in this life. It's all about a true overall development about life. And trust me, people from this platform who are hearing me, life, we all think we are here to stay for long. We all think that nothing will happen to us. Trust me, it's a biggest shocker. Life is totally unpredictable. So till the time we are alive, we should ensure that hospitals should be our last a choice of option to go. But if you're healthy, chances are you will not go to a hospital. Chances are
you may not need a doctor. Chances are that your body may have the full strength to recover, recoup, and make you move ahead in life. So, with my personal experiences, with my personal experiences all around me, I can tell you, trust me, health is wealth. And जो बुजुर्ग कह गए हैं, जिन्होंने ये बात नहीं समझी है, वो वाकई में ही misguided missiles हैं. Or I still remember my grandfather, though he's no more right now, and he was from the army, and you know how army people are regimental and disciplined with their life and keeping the health as a priority. They, as a man who retired from services, till his last breath, by default, 5:45 early in the morning, he used to be up for yoga. His yoga was for 1 hour, and he was physically fit, lean, and mentally sharp till his last breath. This is what yoga or any kind of format of exercise you believe in, it does. And as a lot of stalwarts, I'm no expert. I'm just a person from the industry who I personally feel that getting certain changes in your life and life patterns can bring about a tsunami of effects and efforts in your outcomes. Till his last breath, when my grandfather, as a child, I used to be, every child has a hero worship. And I used to see that my grandfather, why he used to get up at 5:45. One day I followed him up, and one day I was sleeping next to him, and I got up along with him, and I saw what he was doing. So I started enacting what he was doing. And early morning, fresh oxygen coming to my lungs, trust me, I can still sense it. The company of my grandfather, company of a beautiful environment, fresh air, it really does magic. And you just need an hour. That's it. Give your body, your mind 1 hour, and you see miracles taking place. The government of India, Mr. Modi, our Prime Minister of our country, has been continuously making all of us aware that today, if we do not fall in line, the time will be too short for us to recover from all the mental, physical damages which we are self-causing. And due to the pressures of the economy, due to the pressures of the outside world, due to the pressures of technology, we need to actually make ourselves strong. Only physical. All the students, please understand, we are not here. Imanshu, just let me finish this. All the students are not here to prove a point. Your parents will be happy to see you till your last breath. You will be happy to see your children till your last breath. So I personally feel, please look into it. And Yoga Day is coming. It's on 21st of June. And thanks to people like Himanshu, who've been consciously making all of us, the industry, the government, the administrators, the people from the industry, Ayush industry, making us all come under one platform and speak our heart out. And I always believe that together we can and we will make a lot of difference to this country we all love. Thank you so much, Himanshu, for having me over. Thank you so much, Mr. Gaurav Prakash ji, for this awesome session. You are evergreen as ever, energetic, enthusiastic, and you can talk on any topic, like anything. Thank you so much. Overwhelmed and honored to have you here virtually. Heartiest thanks to you. And with this note, we are at the end of the ceremony, final day of International Yoga E-Conclave, and I would like to invite Mr. Himanshu Pandey to please come up on the stage and give your sincere thanks to all-in-one present over here.
Institute of Yoga, Sri Mangalam College of Law and Management, and National Institute of Event Management, also Patanjali. We are especially thankful to each of these institutes for being with us for this 2 days long seminar. Their faculty members, their yogacharyas, their students given their full support virtually and physically on this event. We are thankful to our speakers. To begin with, पहले दिन हिमांशु शर्मा ने परफॉर्म किया था, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे सुमेरु संध्या के सिंगर हैं। उन्होंने भजन से इवेंट की शुरुआत की थी। वी आर थैंकफुल टू हिमांशु शर्मा जी एंड एंटायर आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर HR नागेंद्र जी, पद्मश्री, चांसलर व्यासा यूनिवर्सिटी। वी आर थैंकफुल टू परम पूज्य हिज होलीनेस स्वामी चिदानंद सरस्वती, फाउंडर परमार्थ निकेतन आश्रम। वी आर थैंकफुल टू सुबोध तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी जनरल इंडियन योगा एसोसिएशन एंड CEO कैवल्यधाम। We are thankful to Sri Ishwar Baswa Reddy, Director, Murarji Desai National Institute of Yoga, जिनका सपोर्ट और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। We are thankful to him as well. We are thankful to Professor Rajiv Chopla, Principal, Delhi College of Art and Commerce. We are thankful to Miss Atika Dandia, TEDx Motivational Speaker and Senior Art of Living Faculty. We are thankful to Dr. Suresh Lal Barwal ji, Dean Yoga and Health Department, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर ईश्वर भरद्वाज, डीन एकेडमिक अफेयर्स, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। बहुत सारे स्पीकर्स 2 दिन के सेशन में उन्होंने फिजिकली यहाँ अटेंड किया। हम तहे दिल से अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, परमार्थ निकेतन आश्रम के बिहाफ पे, इंडियन योगा एसोसिएशन के बिहाफ पे उन सभी को शुक्रगुजार हैं। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर BR शर्मा, वाइस चांसलर श्री श्री यूनिवर्सिटी, मिस एंटोनिएटा रोजी, प्रेसिडेंट सर्वयोग University, Italy, Sri SP Mishra, CEO PRCB, Indian Yoga Association. We are thankful to PC Kapoor, Director Finance Committee, Indian Yoga Association, and Director Shivanand Yoga Vedanta Nataraj Center. We are thankful to Karin Shelshire, joining all the way from Australia. We are thankful to Yog Dhara, Divya Yog Dhara, Hemlata Sharma, co-founder, Director at Yogasthali Yoga Society. We are thankful to Harsh Raj Dwivedi, Chairman, Sri Mangalam College of Law and Management, जिनका पूरा सपोर्ट था इस इवेंट में। श्री विपिन जोशी जी के भी हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो कि फाउंडर हैं दून विद्यापीठ देहरादून के। वो देहरादून से आए और उन्होंने कार्यक्रम को अटेंड किया। We are thankful to some of the supporting organizations as well: Patanjali, Vyasa University, the Art of Living Foundation, Serve Yoga International, Resonance, Adhyatm Yoga Kendra, Brahma Kumaris, Soham College of Naturopathy, Sivananda Yoga Vedanta Nataraja Center, Global Institute for Blissful Life Instructions, Service and Security on Blissful Life, Ekam Yoga, Vyasa Canada and the Hindu Temple Barnaby, European Yoga Federation, Doon Vidyapith Dehradun, ICYER Anand Dham Pondicherry, Purna Yoga Advait School। दूसरे दिन भी बहुत सारे वक्ताओं ने हमें पूरा सपोर्ट दिया और पूरा आशीर्वाद दिया। उसी क्रम में वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर बिनी सरीन, पीस एम्बेसडर, रीजनल डायरेक्टर, ग्लोबल पीस फॉर इनिशिएटिव फॉर इंडिया बाय USA डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्म कुमारीज। वी आर थैंकफुल टू साध्वी भगवती सरस्वती जी, सेक्रेटरी जनरल, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस। वी आर थैंकफुल टू योगाचार्य श्री ढक्काराम सबकोटे, फाउंडर एकम योगा, Nandini Tripathi, Director of Program Implementation, Global Interfaith Wash Alliance, Sri Madan Manav, Founder Director, Global Institute for Blissful Life Instructions, Service and Security, Dr. Preeti Mishra, Director, Vyasa Canada and Secretary, The Hindu Temple Burnaby, Dr. Swami Satyaprakash ji, Founder Vishra and Vyasa Canada, आचार्य शांतनु जी जो कि बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, वो ज्वाइन किया उन्होंने लखनऊ से। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर विश्वास मांडले, फाउंडर योग विद्या धाम, Amadio Bianchi, President of the World Movement for Yoga and Ayurveda of European Yoga Federation. We are thankful to Dr. Emi Blasio, Mahamandaleshwar Pandit Yogacharni, Swami Gayatri Devi ji joining from Italy. We are thankful to Andre Reel, Sukadev Volker Bretz. We are thankful to Dr. Yogacharya Dr. Ananda Balyogi Bhavanani ji.
who is also the chairman ICYER Ananda Ashram Pondicherry. We are thankful to Ms. Roli Singh, clinical psychologist, master practitioner for neuro-linguistic programming, Ashtang Yoga instructor. We are thankful to Mohan Karki, founder Holistic Healthcare Foundation and the Yoga Guru Institute, Sri Rohit Ranjan ji, the faculty from Art of Living. We are thankful to Ms. Garima Bhandari, motivational coach and internationally acclaimed holistic wellness and yoga mentor. We are thankful to Dr. Shakti Kumar Pandey, journalist and life skill trainer, Acharya Eric Banquez, Pune Yoga Advaita School, Chile, Yogacharya Sumit from Patanjali Yoga Peeth, Yana Fry, spiritual teacher and life coach on the topic Yoga in Modern Daily Life, Acharya Vipin Joshi ji, our special guest Sri Mukesh Shukla ji, Dr. Anup Joshi ji, Sri Gaurav Prakash ji, Sri Tanuj Narayan ji. At last but not the least, not to forget the name of this, the principal of Delhi College of Art and Commerce, Sri Professor राजीव चोपड़ा जी, जिनका पूरा सपोर्ट और सहयोग पूरे इवेंट में हमें मिला। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट और उनके स्टूडेंट्स और उनके वॉलंटियर्स का के दिल्ली चैप्टर्स से वो हैं और उन लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया इस इवेंट को कोऑर्डिनेट करने में। वी आर थैंकफुल टू ऑल द मीडिया हु कवर्ड दिस इवेंट ब्यूटीफुली फॉर द 2 days सेशन। वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। वी आर थैंकफुल टू आवर होस्ट फॉर 2 days, अलंकृता, फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेकिंग दिस अ मेमोरेबल इवेंट। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का अभिवादन करते हुए उनको सादर धन्यवाद देता हूँ कि वो 2 दिन यहाँ रहे और उन्होंने पूरे ही सेशंस को सुना। वी आर थैंकफुल टू स्पेशली आवर टेक्निकल टीम। वी आर थैंकफुल टू अमित जी फ्रॉम DCAC। वी आर थैंकफुल टू रतिका फ्रॉम DCAC, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके और इस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वी आर थैंकफुल टू जसमीत। We are thankful to Rohit Kumar for media management. We are thankful to Prachi. We are thankful to everyone for who was here and make इसको एक मेमोरेबल इवेंट बनाने में जिन सबका योगदान दिया, हम उन सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपनी मीडिया टीम के जिन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो भी सेशन किया उसके लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for joining us and making it a memorable event. Again, this event is live on www.tinyurl.com/youthnews1234 and the Facebook page of Indian Yoga Association. You can watch, subscribe, like this entire event and the session. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Himanshu Pandey ji, for taking out so much of pain and giving a platform, a global platform, I may say, where all the people related to yoga, wellness, health, meditation, and spiritual gurus, a same platform to come up with virtually or physically. The idea was awesome, and I'm really thankful to you for taking up pain and bringing all people together. With the last note, I would just like to conclude my sayings by it was 2-day event and around 50 people will listen, all the dignitaries from different fields of health and wellness and yoga, and it's like more than 1 lakh people are watching us online, and I do not know, I have not seen them much more than this. You can like and subscribe our YouTube channel also. It's Youth News Online, and we have web portal also where you can see all these things. Apart from this, on the page of Indian Yoga Association you can see, and the summary of 2-day event was टेक्नोलॉजिकल एरा में जहाँ पे इंसान बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, एंजाइटी का शिकार है, तमाम तरह की बीमारियाँ चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, हर कोई शिकार है, हर उम्र का इंसान शिकार है, तो वहाँ पर आपको योगा का और ध्यान का, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और ये नहीं है कि फॉर अ पर्टिकुलर डे, फॉर होल ईयर, फॉर होल योर लाइफ, ब्रिंग ईयर्स टू योर लाइफ and years to your yoga. With this note, I would like to end this session. नमस्कार, शस्त्रीय काल, आदाब, हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।
भैया इसको मिलते हैं ये रोहित एक मिनट के लिए आ जाओ यार, वो जो सामान है सब जो बचे हुए हैं उसको बैगिंग कर